Hello. Yeah. Yeah. Good morning. Okay. 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 I am already. Uh, I have joined through Zoom meeting. Yeah. Okay. No problem. I can wait. Thank you. Thank you, Deepika.
A very good morning to all of you. Good morning. Hello. A very warm good morning to everyone. Respected principal, respected speakers, dear colleagues, and all my dear students. It gives me an immense pleasure to extend a very warm welcome to all of you present here on behalf of the entire college, JNRM, Port Blair, in collaboration with National Commission for Women, NCW. I would like to express my gratitude to our esteemed speakers, Dr. K.S. Pushpa ma'am, Dr. Sitara Balan, B ma'am, Dr. S. Kavita Maithili ma'am, Dr. Abhijit Roy sir, Shri Saurabh Dhudi sir. I would like Poonam ma'am to say a few words on National Commission for Women, NCW. Over to you, ma'am. Thank you so much, Deepika ma'am. A very good morning to all our esteemed speakers, Principal Sir, our HOD Sir K. Venkateshan, my dear colleagues and students. I, Ms. Poonam Ajay Singh, would like to say a few words on NCW with which we are collaborating and doing this webinar today. The National Commission of Women was set up as a statutory body in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990. The NCW for Women is acting as a constitutional commission in the field of protection and promotion of women's rights. NCW has also adopted many prolonged strategies to tackle problems of women like assisting women in readdressal of their grievances, investigate and examine all matters relating to the safeguards which is provided by the Constitution and other laws, take up cases for violation of the provision of the Constitution and other laws. NCW also has various cells under its commission, like complaints and counseling cell, legal cell, public health relation, RTI cell. Now I would ask Deepika ma'am to take forward the session. Over to you, Deepika ma'am. Thank you so much, ma'am. I would like Dr. K. Venkateshan to welcome this webinar. Over to you, sir. Very good morning to all of you. Am I audible? Hello. Yes, sir. Yes, Dr. Venkatesh, good morning. Dr. Venkatesh, am I audible? Yes, ma'am, you are audible, ma'am. Okay.
Good morning, ma'am. Respected Dr. K.S. Pushpa, madam, Yeah, good morning, Venkatesh. Professor of Home Science, Gandhigram Rural Institute, Dr. H.K. Sharma, sir, Principal JNRM, all the participants, faculty members, very good morning to all of you. Good morning, sir. On behalf of the organizing committee, JNRM Department of Home Science, I would like to welcome our esteemed speaker, Pushpa, ma'am. Thank you very much for accepting our kind invitation, ma'am. And all other speaker, Dr. Sitara Balan, ma'am, Dr. Gavita, ma'am, Dr. Abhijit Roy, sir. This program is being supported by National Commission for Women. Day-long program. This NCW is pioneering for the welfare and development of the women as per the constitutional provision. And NCW is one of the organization working for the voiceless of the women in the grassroots level. At this backdrop and background, I would like to thank NCW and all the speakers who have consented to be the resource person and deliver the address. Thank you very much. Thank you, one and all. Jai Hind. Thank you, sir. Madam Principal Sir, hey Madam. Deepika, Principal Yes, Sir is sir. Okay, sir. I would like to welcome our principal, JNRM, to say a few words on this webinar today, which will be presented by our speakers. I would like to welcome Dr. H.K. Sharma, our principal, sir. Yes. Over to Good morning, ma'am. Good morning, sir. morning, sir. Good morning. So, today the Department of Home Science, JNRM, in collaboration with National Commission for Women, Government of India, Today, the Department of Home Science, JNRM, in collaboration with National Commission for Women, NCW, Government of India, New Delhi, is organized a webinar on reproductive rights of women, expressing autonomy of choice with special reference to Andaman and Nicobar Islands. At this juncture, I would like to express my sincere thanks to NCW for supporting us to organize the program. Regarding the program, reproductive rights and autonomy for women is the need of the hour, and women are being vulnerable in our society one or the other way. I hope this webinar will throw lights on present scenario and policy level changes. I congratulate Dr. K. Venkatesan, HOD Home Science, and his entire team for organizing this program. Jai Hind, Jai Bharat. Dhanyavad, sir. Thank you, sir. Now I would welcome our honorable speaker, Dr. K.S. Pushpa ma'am, Professor of Home Science, Gandhigram University, Tamil Nadu. She is having 24 years of experience in teaching. She has guided 9 students to complete their PhD, and 4 students are still pursuing their PhD under her guidance. She has written 4 books, 1 book chapter, 32 edited volumes, proceeding, and 15 publications in international and national journals. She is the coordinator of the Distance Education Center of Gandhigram Rural Institute from October 2010 till date. Ma'am, now I request
you to start this first technical session on the webinar on the topic promoting the reproductive right and gender equality. Thank you so much, ma'am. Over to you, ma'am. Yeah, thank you, one and all. I thank Principal Sir and Coordinator and HOD Home Science, Dr. Venkadeshan, then Dr. Poonam Ajay Singh and Ms. Deepika, and other members who are involved in this webinar, organizing the webinar. I thank one and all for giving me an opportunity to share my views and little experience about reproductive rights and gender equality through online mode. Thank you, Dr. Venkatesh and others. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, one and all. My screen. Yes, ma'am, it's visible. Can you see my screen? Yes, ma'am. Okay, fine. Yeah, promoting the reproductive rights and the gender equality. When Dr. Venkatesh contacted me over phone and asked me to take class on promoting the reproductive rights, gender equality, I was wondering what I am going to teach this, and this is, subject is new to me, even though I know something about gender equality and other things. When after reading the lot of literature, I found that yes, this is the right topic everyone should know. We have lot of fundamental rights: right to speak, right to education, right to live, voters' rights, and everything. So, reproductive rights. Do we need reproductive rights? Or even if it is legally available, is it practical to implement such rights? You might have studied under physiology paper, reproductive health of girls, reproductive health of women in India. So, what do you mean by reproductive rights? Reproductive rights are the rights of individual to decide whether to reproduce and have reproductive health. This may, anything else? Yeah, ma'am, actually your slides are not visible, ma'am. Yeah, let me check. Just a minute. Now, No, ma'am. pardon? It's not visible, ma'am. Yeah, now. It's visible now. Okay. So reproductive rights are the rights of individual to decide whether to reproduce and have reproductive health. This may include an individual rights to plan a family or terminate a pregnancy or use contraceptives, learn about sex education in schools, and gain access to reproductive health services. Here, to plan a family, what is the marriageable age for girls? Can anybody answer? Can anybody answer what is the marriageable age for girls? Age at marriage. Earlier it was 18. Ma'am, earlier 18, but now Yeah, now has recently been it has been 21. changed to 21. Good.
it is changed to 21. But in reality, in many places in India, especially in rural parts of India, the child marriages are quite common nowadays, especially during this pandemic situation, because the parents, they don't have economic security, and as a result they want to settle their daughter at the earliest, and the no schools and only online classes, no colleges, and dropout rates are high nowadays for the last 2 years. If you look into the statistics, school dropouts rates are high. Gandhigram, which is located in Dindigul district. In Dindigul district, some 10 days back, there was statistics in newspaper. Dindigul district is top 3 in Tamil Nadu for child marriages. Why it is happening? When we say reproductive right, the girl has every right to plan a family. But the rights are only in black and white, in paper. But in reality, it is not so. So once they get married, immediately the elders in the family, they expect the grandchildren in their family. If the girl is not in family way, another 6 months or within a year, then the family members, neighbors, and the society will blame the girl. You just see the neighbor daughter, she got married. The immediate next month, she got conceived, and opposite side house, like that, they will show some example. So the girl doesn't have the freedom. Sometimes, even at the age of 18, why the marriageable age increased from 18 to 21? Because the physiologically, the girl will get ready by the time to receive the child, to get conceived. Then when we had a camp in the neighboring villages, there we were educating about the young adolescent girl about marriageable age and other things. A lady was telling me, at the age of 10, I got married. Then at 11, I got my first child. Before reaching 18, I got 5 children. I am hale, I am healthy. Now you people are telling the girls are not physically and mentally matured enough to plan a family. Then we had a very good discussion with that old lady. Then I was telling her, you just see, there are a lot of lifestyle modification. Whatever the food they had earlier, we are not getting now. The environment, the climate, there are many aspects which helps for a successful family life. So, to have a child or not to have a child, or to use contraceptive, everything depends on the men in the family and the in-law. Even though we say reproductive rights. Then rights of all couples and individuals to decide freely and responsibly is their number. How many children we can have? What should be the interval between each child and timing of their children? But is it so in practice? You just think of it. What is happening in and around our locality, among our relatives, among our friends. And one student, some 15 years back,
She studied in our university. She did a BSc and she did MSc also. And one fine morning, I saw Mangal Sutra in her neck. Then I asked her, "Are you married?" Her friend said, "Madam, she got married immediately after completion of her 10th standard." That means after completion of 15 years. But luckily, her husband permitted her to go for education. So she studied in school, and 1 year gap, she got her first child. Then she did her BSc. 1 year gap, she got her second child. Then she did MSc also. Then later she was running a non-governmental organization. So it is not happen in all families. Or it is not happen to all our friends. So it also includes right to information and means to do so, right to highest standard of reproductive health. Despite a national law penalizing marriages of girls below 18 years, now it is 21 years, and policies and schemes guaranteeing women maternal health care, in practice, India continues to account for highest number of child marriages. Then there was a status in the last month paper. Child marriages are on increasing during pandemic period. And the child marriages are the root cause for 20% of all maternal death globally. Maternal death, how many women died for 1 lakh per 1 lakh pregnant women. Okay. So then the infant mortality rate, if you look into that, we had health for all by 2080. Then we fixed one target. We could not achieve that target. Again, we changed into Millennium Development Goals by 2010. And that also we could not achieve. Even now, I'm not sure about it. The infant mortality rate is 82 per 1,000 population in India. Even in northeast part of India and Bihar, Jharkhand and the Uttar Pradesh, the infant mortality rate is high. You might have heard of female infanticide in India. Lot of legislation has been formed to prevent female infanticide and female feticide in India. So some 10 years back onwards, there is a board in almost all scanning center. We won't tell the sex of the child. Amniocentesis is a method which is used to identify the sex of the child. We won't tell because in the womb itself, many doctors, I'm sorry to say, the doctors who are not really practicing and they are advising to kill the female child in the uterus itself. In Tamil Nadu, there is a place called Usulampatti. It was very popular because of female infanticide. So, as a result, what is happening? You may think that what is the relationship between reproductive rights, female infanticide, and status of Hello. women? Hello. Hello, madam. Yeah. Madam, sorry for the interruption. Your slide is not moving, madam. Slide is not. Somehow it got passed. Let me. Just a minute. Okay, madam. Which slide you are seeing now?
Now I'm seeing only second slide. Huh? Second slide. Slide number 2. No, India's national population policy guarantee. Oh, the second slide only now it's showing. No, let me. No, first itself. Now? Also same thing. Madam. Now it's changed, madam. Child Change, marriages ma'am, in once India. again. Madam, one option is there seen on the slide above left side, the resume slide. So click that one, madam. Pardon? Not clear. Resume slide. So one option is there. Just click that one. No, I could not follow. It's not clear. Madam, your slide is there, right? Yeah. And then slide above right side, one option is there seen in the resume slide side. Can you able to see, ma'am, that one option? Now, can you see my slide? Yes, ma'am. Can you see my slide? Yes, ma'am, I can see, ma'am. Okay. It is Ma'am, India. can you change one second slide? I will see. Pardon? No, can you change one second slide, ma'am? I will check it whether it's moving or what. No. The thing is, when I move to next slide, it says it is passed. Anyway, I shall look into it. Now it's changing. Judicial rush. So, ma'am, just press the F5 button, madam. Can you see the slide now? Now it's visible, madam. Kindly press the F5 button, madam. Kindly press F5, F5. F5. Yeah, Yes. it's the first slide. Okay, ma'am. Carry on, ma'am. Okay. Okay, thank you. So there is a relationship between sex ratio and the number of live births. See, sex ratio, I think as per 2011 census, the sex ratio of India was 933. Kerala was the highest because the female population is higher than the male population. Whereas Uttar Pradesh and Punjab is having low sex ratio rate. So, as a result, what has happened? So the government is the government with the national population policy guarantees women voluntary access to the full range of contraceptive methods. In practice, state governments continue to introduce schemes promoting female sterilization, including through target, leading to coercion, risky substandard sterilization procedures, and denial of access to non-permanent methods. See, in many places, as per MTP Act, medical termination of pregnancy, unless otherwise it is very needed. If some deformities in the child, normally the doctor won't advise to go for sterilization. Okay, so the MTP is medically approved one. So to afraid of
or the unwed mothers, what they do, they go for unhygienic means of abortion. There was a campaign, child sex selective abortion. Preventive. One has to prevent the sex selective abortion. So the government introduced many schemes. Even in my slide, it is mentioned to introduce schemes promoting female sterilization. Now, there must be a question in your mind. Why not male sterilization? Why only female sterilization? There are different permanent methods, temporary methods, whether it is permanent family planning methods or temporary family planning method like use of loop or some contraceptive devices, only female are using it. Male are afraid to use it. When I went through some of the study in the morning, I found that there are two permanent methods. Tubectomy is for female sterilization method and vasectomy is for male sterilization method. In India, 93.1% family planning were done on female only. Statistics research say No. the tubectomy is very difficult than male undergoing vasectomy procedure. But even the government is not introducing schemes for promoting male sterilization. As a result, only women are suffering. So I can say it is gender inequality. As I told you, only 6.8% of male underwent sterilization, that too in difficult circumstances. When there was a problem among the female or some issues, the male underwent. In the world, Bhutan was the only country having 40% of the male underwent sterilization, permanent family planning method, followed by Switzerland, Canada, UK. But India is very lost in the queue. Once, some 3 years back, we went to one village near Dindikal district. Surprised to know that many elderly families were having only one child. Then I asked how it happened that too in 70s, only one child, 70, 72. Why? Almost all houses only one child, but their children are having 2 to 3 children. Then that time, emergency was imposed in India, and that period is called Misa period, and many men folk were taken by compulsion, coercion to the hospital, and they underwent surgery to reduce the population rate of the country. It happened in 1975. Okay, so the procedure then there are some judicial rescue by decriminalizing adultery
You know adultery means? Yeah, men or women having contact with the other than husband or wife. That is called adultery. Then homosexuality, lesbian. Judgment, the court has held clearly that women have a right to sexual autonomy, which is an important fact of their right to personal liberty. Then another judgment by Puttaswamy specifically recognized the constitutional right of women to make reproductive choice as part of personal liberty under Article 21 of the Indian Constitution. Okay, the human rights of a girl child are very much alive and kicking whether she is married or not and deserve recognition and acceptance. Even now, I read the article somewhere in Rajasthan, at the age of 96, a male became a father for a child. His wife's age was 24 years. Just imagine. Then he had nearly 7 to 8 marriages. When the journalist asked him, then he said, the first marriage, she could not deliver a child, so I got married, second one. So even though having two wives is not legally accepted, but in many places, polygamy is allowed, especially among one particular religion. Polygamy means marrying more than one wife. Okay, but as per our Hindu tradition, only monogamy is permitted, having one man only for one woman. This is the law. But in many places, even in one particular religion, especially Muslim community, they are not following family planning method, even among educated group, because they, as per their law and as per their sacrament, they feel that undergoing sterilization is against the wish of the God. So normally they won't do it. Okay, but sometimes those days the number of children in the family was very high, 12, 13, but now it has reduced. One period there was one child now. Now again, many families, they move to 3 child now. Even in China, you know, one child policy. Even in China, as per their law, they should not have second child. Even if they found anybody is having second child, they will be penalized by the government. This is the situation. Here, the women have the right to decide freely and responsibility the number. How many child? Can you hear me? Can you follow me? Any doubt? Yes, ma'am, we are following you. Okay. If you have any doubt, please stop me so that I can clarify it. Nowadays, in many cities, that surrogate clinics are coming. Even there was a very good write-ups in famous Tamil magazine Ananda Vigadan. Vadagai Thai. Vadagai Thai means rented mother. Vadagai Thai. That means
with the consent of husband. After having 2 children, many women to earn money and they go for surrogacy. Surrogacy means people who cannot deliver a child or who don't want to carry a child for 10 months or who don't want to become pregnant, and their sperms after fertilization or kept it in the womb of another woman, in the uterus of another woman. So the identity is kept confidential, and there is a link between hospital, the actual mother, and the surrogate mother. The surrogate mother may not be knowing to whose that embryo that woman is carrying, or the person may not be knowing. Once the delivery is over and she has to give the child to the actual mother immediately. Till that time, the family members of the actual mother take care of the surrogate mother. They will give her nutritious food. They will take care of her health. They will do the medical checkup, health checkup regularly, everything. After 10 months, once she delivers a child, then there is no bonding. Pay some 5 lakhs, 10 lakhs. Like that in cities, the hospitals are doing, and even in there are clinics run by many people for surrogate clinic, that is called. So many men, again here I would like to say, even though it is a right, with the permission of men, women are doing, sometimes compulsion. In Coimbatore, a girl narrated a story, and she was about to give a ovum to every month to a hospital, and in turn she will be getting some 10,000, 15,000 regularly. So her husband was insisting her to produce more ovum. So what happened? No, then the doctor injected her some steroids and other things. As a result, she became obese and she developed lot of health complications. And her husband compelled her to undergo this to earn money. This is their new kind of business. But women doesn't have the right to say. But many women are volunteers to give money for her husband treatment, child education. In foreign countries, in many places, one can see a board, it seems. Wombs are available for rent, not rooms, or not or OOM. It is wombs, WOMB. That means uterus. The girls who are moving to Western countries for higher studies, who could not pay for education and other things, they go for surrogacy and they are giving their uterus for rent to keep somebody's fertilized eggs in their uterus for 9 months or 10 months. You will be wondering to know all these things. It is happening because they will be in a protective environment. After delivery, the girl will go for higher study after getting a huge amount, but it will affect her health. Okay, so the women have the right to decide freely and responsibly the number, spacing, and timing of their children. One of my close family
daughter, immediately after the second delivery, she got conceived. Then I asked her, why don't you go for some temporary methods, or why don't you adopt some permanent family planning method? Then she said, my husband wants one more child. So without any gap, even if you look into the second and third child, both looks like twins. So the lady doesn't have the right to decide her spacing and timings of having their children. So have the information and means to decide freely and responsibility the number of spacing and timing of their children. Then reproductive health is very important. Women are not machine continuously giving birth to a child. She has to be physically, mentally healthy. And she has, nowadays, many women or go for job as per government norms, maternity leave won't be available for third child. Government is not giving any benefits to the third child. So a person has to take a decision. It is my right. A girl has to have a feeling. After understanding each other, say for about 1 year after marriage, I can have a child. It is your decision whether to have a child, whether to have one child, or whether to have more than one child. It is everything depends. Recently, I met one of my friends. Then she said, whether do you have your daughter is having any child? Then she said no, because both of them, they don't want to have a child. They feel that it will be a burden. They cannot enjoy life. They want to do more service. This is one kind of family. Nowadays, this kind of groups are coming up. In another family, they want to go for adoption. There are many children, abandoned child, illegitimate child, or wantonly put the child in the government cradle, and we like to adopt a child. So it is a decision of a person. If it is a collective decision, then it is fine. That is why we are telling there should be equal right, gender equality. Okay. Then right to equality in reproductive decision. The right to equality in reproductive decisions includes right to choose whether and when to marry and start a family. Even in some part of our country, especially Northeast, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, they encourage only love marriages. And it is not arranged marriage. Especially in southern side, we want arranged marriage. And sometimes without the knowledge of the girl, the family are making arrangement, not knowing the age difference, and they want only wealth. They see the family, they want the wealth should not go to somebody. In our place, a girl at the age of 15 years, they arranged a marriage for maternal uncle. Her mother got married to a maternal uncle, and her grandmother got married to a maternal uncle. We know very well that so nowadays complications are coming
complications are happening among the child if it is a blood relative marriage. Even in some families, Sabinda marriages are occurring. You know what is Sabinda marriage? Sabinda marriage, marrying a person with blood relation. Mother's sister's son and mother's another sister daughter getting married. That is Sabinda marriage. So, without the consent of that girl, they made all arrangements and they invited us also. Then I went for that marriage. Then I asked, okay, whether marriage was over. They said no, because somebody informed the social welfare department and they came and stopped the marriage. But we performed the marriage in the morning itself. That boy was 32 years, the girl was 15 years, 17 years gap. The girl was studying in 10th standard. Then I told the parents, why you are doing like this? Let the girl study. Then after marriage, she went for schooling. She completed +2. One fine morning, I came to know that their marriage dissolved. Many marriages are dissolved not through law, with a local procedure. With the help of panchayat or local leader, they simply divorce. And that girl went for higher study and she got married to a person whom she was fall in love with that person. Okay, so that girl should have the rights to decide their life partner. That is very important. Then right to sexual and reproductive security. Gender-based violence, GBV. We are talking so much on gender-based violence. Even nowadays, we are seeing in newspapers, we are hearing through news, neighbor, gender-based violence. It includes sexual violence, incest, trafficking, female trafficking, dowry-related violence, and gang rape. And child abuse, especially female child abuse. So, protection of physical and mental integrity. Women should have the right to live a life free of mental harm and violence based on the fact that you are female. So for that, education and employment is very much essential. Government has introduced, implemented number of programs for improving the educational status of women and giving lot of entrepreneurial avenues. And a girl has to manage gynecological problems, and menstrual hygiene is very important. And school UNICEF through WASH program, WASH means W, capital W, capital ASH, that is water, sanitation and health. Menstrual hygiene practices, good promotion, good practices. And treatment and prevention of sexually transmitted diseases, especially sexually transmitted infection, HIV and AIDS. I think because of Corona,
and people are talking less about HIV and AIDS. So we should not do the different treatment for HIV/AIDS patients, because they have the rights to live. There are rehabilitation measures. There are rehabilitation measures. Can I stop it? Then can you see my screen? Some problem, I think. Hello? Hello? Yes, ma'am. Yeah, can you hear me? But some problem with my PowerPoint. Suddenly, something has come. Yeah, my anyway. Okay. So whatever you learn here about reproductive rights, hello, some disturbance. Somebody is dancing. ஜீவா அதை செக் பண்ணுங்க, யாருன்னு பாருங்க. ஜீவா நோட் பண்ணுங்க. Okay, thank you, one and all. Năm trước con hẹn đầu xuân này em ஜீவா அது என்னன்னு பாருங்க. ஜீவா பார்த்துட்டு தான் சார் இருக்கேன். ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இருந்து. nghèo ngồi quanh bếp đò hay hay những đôi mà nếu con không về chắc mẹ buồn lắm mái tranh nghèo không người giữ
Jiva sir, I think there is some problem, sir. Hello. Jiva sir, can Ma'am, you are you hear me? hearing? Sir, there Yes, was yes. some problem, I think. Not a problem, madam. Some people are on the mic and all. Wait. I will remove the people. I think now. Just give me 1 minute. I will remove all those. Okay, sir. Pushpa ma'am, sorry. Hello, Pushpa ma'am. Ma'am, she is not there. Actually, there was some distraction in this line. Actually, some people were trying to ruin this webinar. Anyways, thank you, Pushpa ma'am. Now, let's invite the next speaker. Next technical session. That is Dr. Ma'am, Assistant Professor of Home Science, Government College for Puram, Kerala. She's research supervisor for 2015. Four students have been awarded under her guidance, and presently we are pursuing this PhD under her. She has edited 5 books, 3 chapters. She has contributed with books. Content is written for the STEM platform of UGC. She is the coordinator in Dance Fest. She is also coordinator and scholar. She is a member of examination board of PSC, and she has also been awarded the Young Scientist Award of India Society of Extension ECAR, New Delhi. Welcome to the webinar. Classes will be managed. Good morning, everyone. Am I audible enough? Hello. Yes, madam. Good morning, madam. Audible, madam. Yes, good morning. Thank you so much, Dr. Deepika, for the wonderful introduction. And thank you, Dr. Venkatesh and team for inviting me to this wonderful webinar. And special thanks to Dr. Pushpa ma'am for setting the platform so that it will be easy for me to continue from where she stopped. So very good morning once again, and kindly give me apologies if my voice is not so much audible and clear, but I will try my best. Okay, I hope my screen is visible too. Yes, ma'am, it's visible. Yeah. Yes, ma'am. Yeah. So today I was asked to talk about reproductive rights with national and international perspectives. So today I'll be simply sticking on to the reproductive rights alone. So we will be discussing throughout this 1 hour journey, we will be discussing on the reproductive health, the reproductive rights, Indian scenario, and some global thoughts. First of all, you all know what is reproductive health. As we all know, it refers to not only about the health issues that concerns in the reproductive age group of 15 to 45, but it focuses on all reproductive processes, functions, and systems at all stages of life. And it not only focuses on the women's health, but also the health of every person, irrespective of gender and age groups. And of course, it is a key to women's overall health, no doubt on that. Reproductive rights are the right to reproductive and sexual health, which include the right to live. Right to live in the sense, the right to have liberty and the security of a person, the right to healthcare and information,
and the right to non-discrimination in the allocation of resources to health services and their availability and accessibility. I will come on these points later. Why do we need reproductive rights? As we all know, we were talking about reproductive rights from the morning, and we are not sure like why do we need that? As I said earlier, reproductive rights refers to the rights of men and women to be informed, as Dr. Pushpa was mentioning, to have access to safe, effective, affordable, and acceptable methods of family planning of their choice. Not only that, it also covers other methods of their choice for regulation of fertility, which are not against the law. And it is also the right to access to better healthcare services that will enable a person, especially women, to go safely through pregnancy and childbirth. So that is why we are in need of reproductive rights. And let us think about our scenario, the Indian scenario. Why do we need to talk too much about the reproductive rights? See, as we all know, we are living in a country, whether it be Kerala, whether it be Tamil Nadu, whether it be Andaman, whatever it may be, we are living in a country where 70 to 80% of the population are still on rural areas, and a good wholesome of them are marginalized in terms of socio-economic cultural practices. And we are still striving for the right to have access to many basic things. Safe drinking water. Do we have that? Do all the population in our country have the access to safe drinking water, food, clothing, shelter, basic education, freedom to move, ability to make own decisions about their own life, whether it could be a career, whether it could be for higher education, whether it could be for anything related to personal life. Let it be the right to equality. We both, for example, both people, a man and a woman, is working in a sector. They are doing the same job for the same time, for the same number of hours, and they are paying unequally. So are you having the right to ask about that? Do you have correct or proper information about everything that is known to you, that has to be known to you? Are you aware about all the programs and policies being offered by the government? Being a beneficiary, are you getting all the privileges being given by the central or the state governments? So my answer to all these questions would be probably no. So this is our scenario. So we are living in a place where we don't have much to talk about the rights to the basic privileges. And here we are talking about the reproductive rights. And that is the main reason reproductive rights has become their own importance. So this is the scenario, the Indian scenario. When you talk about reproductive rights, it is a right of all couples and individuals to decide freely and responsibly the number, the spacing and timing of their children. And you know one thing, nowadays reproductive rights is more talking about reproductive choices. What do you mean by choice? Suppose if I'm 20 or 20, the age of marriage has been increased to 21. I should say it should go up to 25 at least. Suppose I'm a 30-year-old woman who recently got married. I have the right to decide whether I need children or not, because it is purely personal. It comes to purely personal in terms of my health, my physical conditions. Nobody else knows how I am matured enough to handle a baby, how my womb is matured enough to hold a baby.
how my physical conditions permit me, whether I am physically, mentally, spiritually, emotionally matured enough. If the answer is no, then I should have the right to tell that I don't want a baby. So this is a right to information and means to do so. So am I getting the basic information about all these things? The right to higher standard of reproductive life. When we talk about reproductive health, one thing which always, disturbs me is that we always used to conduct lots of training programs on safe menstrual hygiene campaigns. So during these campaigns, we used to ask the girls, like how many, even the women, young women, like how many times in a day have you seen your genitals, your vagina? In a week of time, have you ever noticed the changes happening inside your body, inside your genitals? You are young adolescent girls are more worried about their health them in terms of their physical health. If a pimple has come to their face, if an acne has come, they immediately go and apply some creams or lotions and they try to peep it out. If some tan has come, they immediately go and do some, remedies, home remedies, which they happen to see in Instagrams or in WhatsApps or the messages that is being given by the friends. But have you ever noticed about the color changes or the acne or the small bruises that happens in and around your genital areas? The same with the boys too. But still, I should say boys are far better than girls. The moment that you feel something itchy or irritable, or you feel anything awkward, or which is so-called not normal on your genitals, remember that is the first sign given to you by your body about your reproductive health, that I am not okay with my reproductive health. It could be any hormonal imbalances. It could be the signs of any issues or conditions. It could be a warning for PCOS or whatever it could be. But we often, I repeat the term, we often neglect such warnings or signs given by the body. Why? Because we are not aware of. We are not aware about our health. Surprisingly, in 2018, I'm sorry that we academicians have a tendency to quote examples from the field. It is purely just to make alert that we are talking in on the basis of the scientific data that we have. 2018, we conducted a study on domestic violence among women in the coastal areas of Thiruvananthapuram, the capital city of Kerala. And the shocking result was that almost 64% of the women in that area has undergone hysterectomy, that is, removing uterus. And when asked the people about the reason for this hysterectomy, almost 100% of them were not aware about any particular reason cited for that. They said, I am having bleeding, I am having severe pain in the periods. So I consulted the doctor and it got removed. See how interestingly or how simply they used to tell that they removed one organ from their body. And that too, they are not aware about any proper reasons. If you are a girl or a woman with long hair and you love your tresses, and I happen to tell you, and I happen to make you cut the hair one fine morning, right from the shoulder, how comfortable will you be? Just imagine that. And here, you're one of the main organs which support you, which sustains you throughout your life, has been removed, and you're not aware about the reason behind that.
Here comes the right to information. Why? What is happening to me? What changes are happening in my body? What can be done? How these could be solved? How I could improve my health? The right to higher standard of reproductive health. When you talk about reproductive health, as I said earlier, it doesn't mean that it is only associated with having a baby or thinking about the number of children that you have or the spacing. It starts right from the day one in the life of a person. We always used to quote that what you are at 20 determines your 40s, and what you are at 30 determines what you are at 50, which is absolutely true in terms of reproductive health, especially. At the age of 20, if you are having your regular periods coming, if you are having good food, good exercise, good mental health, and you are having everything to the normalcy, and if you are enjoying a better health, trust me, you will have better life at your 40s. But if you are anemic, if you are not getting your periods properly, if you are having always the signs and symptoms of laziness, dizziness, you are always easily caught with diseases, your immunity is low, trust me, your 40s will be very hard to pass through. Because the body is like a biological clock which gives alerts at regular intervals. It is we, the fellow people, who are not being conscious, or we are not being aware about these alerts. So the right to highest standard of reproductive health is the right of a person. Then comes the right to make decisions concerning reproduction free of discrimination, coercion, and violence. One of my PG scholar who got certified as a safe menstrual trainer, and she used to conduct classes in almost all the schools and colleges in the town. And one day, and she is the one who preaches about the necessity of having cloth pads, sanitary pads, and we should go back to eco-friendly pads and stop using the the branded products that is being available in the market. So once she just shared an experience, like when she took the menstrual cup to her home to introduce the same to her mother, immediately her 84-year-old grandma interrupted their conversation and said, "It is very harmful and you should not practice that, and it is against the culture of their family." So my thought was, 84-year-old grandma must be knowing about this menstrual cup for the first time in her lifetime. But she had a pre-notion that it is harmful and it could spoil their culture of the family. And immediately, the so-called menstrual trainer is forced to obey her orders. Imagine. So do you have the decision or the ability to decide what to be used and what not to be used? Okay, when it comes to health. Again, what does it mean? Simple terms. You have reproductive rights means you have the right to be physically, mentally, and socially healthy with access to medical, mental, and social facilities, services, and supports to exercise your sexual and reproductive rights. Nowadays, we don't talk about reproductive rights without the sexual rights. That is where it comes about the gender equality. So we are not, over the years, we were talking only about the binaries, like male and female.
But we need to understand that there are some other sexual identities as well, like the trans people, the lesbians, the gay, LGBTIQ communities. So they all have the rights. When we talk about reproductive rights, it's not about the women or the binary alone, the men alone. We're talking about everyone. Everyone have the right to be physically, mentally, and socially healthy with access to medical, mental, and social facilities and services. You should be able to make decisions about your reproduction free of discrimination, cursing, and violence, as I said earlier. There was a woman, a fish vendor, who used to come and give fish to our home every day. She used to tell that, as I said earlier, the study on domestic violence in coastal areas actually came to my mind from this fish vending lady only. She used to tell that she is being brutally, I should say, brutally assaulted by her husband, even during her periods, the periods of her periods. So she don't have the right to say no when she is not okay. So it is your decision whether you should have 0, 1, or 7 child. If you are healthy, you can have n number of children, provided you should have all the facilities to take care of that child, because the child too have rights just like you. The newborn baby too have the right to live peacefully, the right to live the way that he or she or that particular person would like to have, the right to eat good food, the right to eat nutritious food, the right to live, the right to move, the right to educate, the right to have proper shelter, clothing, everything. And if you are not paying attention to all these rights of a child, you are spoiling the rights of a child. It's a human right violation. So it is your decision whether you are capable of meeting your rights as well as meeting the rights of other people. It is your decision whether you undergo female sterilization now or when you are at 50 or not at all. See, when you have an issue, a hormonal issue, say, or any health issues, you can have n number of options. You need not have to stick to one particular doctor. You can take any number of opinions. We have lot of medical therapies and treatments nowadays available. We need not have to stick to any particular system of medicine. We can try it out for any number of medicines, and I'm sure there will be some option for anything, rather than attending the next day about a sterilization or a hysterectomy. And hysterectomy, remember, is not the end of all the the ill health or the sufferings that you were had all over all these years. The moment your periods got stopped, let it be at the age of 50 or 45 or whatever, the body will start getting the signs of aging. The moment your estrogen and progesterone hormones, which are supporting you like anything, the moment these hormones got disturbed or they stop functioning, dear girls, remember that there starts the curse of your life. So it is us to think and remain properly to understand. Nowadays, you are having n number of opportunities, not only these type of webinars. You have n number of materials available in, whether it be in Google or in any social media platform or WHO, UNFDP websites. The moment you need to know about all these things, just try to read authentic sources of information.
Consult with doctors, talk with people who know about all these things, and try to develop a better idea about all these things. And once you have enough knowledge about your life, your personal health, how many of you know what is the status of your health at the moment? Can somebody on your video or audio and can give me an answer? Like how many of you, I can see 36 participants. Let's have it 30, removing all the co-host and host and everyone and the organizers. At least 30 students are there in this group. How many of you are aware about the status of your health at this moment? How many of you can claim that I am very much aware about my health, whether it could be my, reproductive health or my circulatory system or my respiratory system? I am very much thorough about my systems. How many of you can claim that? Can someone give me an answer, at least in the chat box? No. So if you are not able to know about yourself, or if you don't know, and I assume that you are at least at the age group of 18, at least you have attained. And at the age of 18, if you are not able to claim yourself, you don't know about yourself, how come you can take a decision about your future? How come you can take a decision that will affect the life of other people? So start exploring yourself, start exploring your health, start exploring your mental health. How far can you handle the situations? How good are you emotionally? How good are you physically? How good are you? See, we always used to talk about the socio-economic factors only in our life. Yes, economic factors play a very important role in our life. That's true. So is the social factors also. But what about the mental factors? What about the reproductive factors? What about the physical factors? How many of you walk 10,000 steps every day in your life? How many of you have basic balanced diet throughout a day on 30 days in a month? How many of you take all the supplements if you are supposed to have? How many of you walk under the sun for 20 minutes every day? How many of you take an wholesome of all the balanced diet with all the food groups? How many of you take pulses every day? How many of you make sure that you have a protein portion in your diet on all the diets in a day? How many of you drink 2 liters of water every day? If you don't have answer to those questions, I should say, even if it is 21, or even if it is 25, or even if it is 35, you are not ready for marriage. Because unless and until, if you are not aware about you, you are not ready for anything, not only about marriage, but for anything. So these are the points where we need to rethink, go back and rethink about you. I'm sure that we will be having a lot of scholarly talks after me also throughout the day. Listen to everyone, pay attention to everyone, just go back home and discuss with your family members, irrespective of gender and age group. Discuss with them about whatever you heard today and just take a diary and start asking about yourself, about your health. Are you getting all those things? How many of you have, closed the pores or the holes that has come on your tooth?
Many of you must be having toothaches, right? How many of you are, for the past 2 years, you must be in online modes of education and must be fed up with screen times and all? How many of you have checked your eye power recently and has corrected it, but still striving to look into the very nearest or very far objects, even at the age of 18? If you are not ready to have a self-check, because health is the only thing that you possess as your own. If you have n number of crores and crores of rupees in your bank, that is good for the branch manager, that he had good volume or revenue from you. If you have lots and lots of degrees on your hands, that is good for your CV to impress others. Nothing matters when it comes to personal health. And if your health is killing you like anything, there is nothing to be called like, you can't say that I am healthy. If you can't say that I am healthy, you are no longer a person to be called. The moment you will be known by different names, with doctorates or IAS or whatever, that's prefixing and suffixing your names, the moment your health got stopped, every one of us will be known by only one name, the body. Isn't it? The moment life has gone from your body, you will from your soul, you will be called as the body. Take that body off. The body will be coming. The body will be taken to the cremation within an hour, isn't it? So reproductive rights means all these things. It is not only about talking about 15 to 45 years of age group. It is about everything. I hope I am clear to you. If you feel anything to be stopped, please do so. And we have lots of rights: the right to equality in decision-making process, the right to sexual and reproductive security, the right to sexual and reproductive health services. How many of us are using the services that is being given by the Anganwadis, the ICDS, or any similar government projects or programs? Are you a real beneficiary of any of these programs? I don't know about the cases in Andaman, but I'm sure that it is following. The adolescent health clubs are there, affiliated to every ICDS Anganwadi units, for adolescent girls to look after their health, whether they provide awareness classes, training programs, they screen the adolescents for anemia, they provide anemia, iron, folic acid tablets and all. How many of you are beneficiaries of all these things? The right to access for information and education. Do you have these knowledge with you? Are you aware about all these things? So the issue always with this health is maternal mortality, as Madam Pushpa was discussing about. Number of women die due to pregnancy, delivery, and its associated complications. Contraception, abortion, sex education, causative population control, sex ratio. You know what is sex ratio? Number of women for 1,000 men. It's a ratio. Scheduled caste and scheduled tribe. Child marriages, clinical trials, housing, surrogacy. Dr. Madam was discussing about the same. Right to food, anemia, poverty, HIV, AIDS, malaria, sexually transmitted diseases, STDs, youth sexual health, cruel, inhumane treatments, gender-based discriminations. These are all the issues that happens or are associated with the reproductive rights of a person. That's what I said. It's not merely about the health or the right to have the baby. It's more than that. When you talk about child marriage,
That is a serious issue. Age-at marriage is one of the serious issues that we are facing now. Whether the child has the right to tell her parents that she is not ready for marriage when she is forced to have the child marriage. So what our constitution gives, as we all know, the Indian constitution is one of the beautifully crafted and very, basically beautifully drawn constitution ever anyone have. So Article 21 of the Indian Constitution says about the right to live life. Everybody in the country have the right to live. And Article 14 and 15 supports the same, the right to equal access to the law, irrespective of caste, color, creed, race, gender. The right to live without discrimination. You cannot discriminate anyone. See, this now it is time 11:35. I always used to tell, like, I don't know what is my attitude or mental stability at 12:35. Okay, after 1 hour, what is going to happen? I don't know. Then how come I can determine the life of another person? If I don't have my own choice or my own restriction in my thoughts or my feelings or emotions for another 1 hour, then how come I can think about discriminating the life of another person? I don't have the right. We have human right keys, 12 human right keys to reproductive rights. As we discussed earlier, the right to life, liberty and security of a person, right to health, including sexual and reproductive health, the right to decide the number and spacing of children, the right to consent to marriage and to equality in marriage, right to privacy. Everyone has their own privacy. Recently, one of my friend was asking to a student who was studying in the third year of her degree program. Like, she said she got engaged and she's getting married soon. Then the friend asked, like, why are you in a hurry? Why do you want to marry? Why do you want to have marriage immediately? Then she laughed and went away. Then after that, another girl from a postgraduate class, she came and she told, like, she got married during her degree classes itself. It's been 5 years. Her parents, her in-laws are supporting her to continue the education. And it's been 5 years, so she is pregnant now. So the same friend immediately asked, like, why now? Why can't you wait for another 6 months to complete your course and you can think about that? As far as a teacher is concerned, the question is purely unintentional. Like, she is a well-wisher of that particular student. So she was thinking, like, if she could wait for another 6 months, she could finish the course very neatly and she can go back and have her life. But when this comes to human rights, do this teacher have the right to ask to the child or to another person, like, why did you have pregnancy right now? It's not only the teacher or the mother. Nobody have the right to ask to anyone, like, how many children do you want? At what time do you want pregnancy? Or what time you should not have? And why are you not still having a baby? Because it comes under the right to privacy. Even a husband don't have the right to ask these questions to the wife, and vice versa. Because it's human rights. And that means the decision is purely by that person alone. Nobody have the right to ask, under whatever be the reasons.
So just imagine how powerful the right to privacy is. Have you ever thought of this thing? The right to equality and non-discrimination, the right to be free from practices that harm women and girls, the right to not be subjected to torture or other cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. See, I don't know how many of you are aware, but we have a magazine named Vanita, which means women, in Malayalam, which is supposed to be the friend and path shower of women in Kerala. I mean the women across, the Malayali women. That is how the tagline of that particular magazine goes. So they conducted a survey on knowing the attitude of women towards wife beating. Okay. So the finding has created a lot of mess in the state, because in the survey, 67% of the women have reported that it's okay to be beaten by the husband if he doesn't find, if he finds some fault in the wife. So the tagline is, it is okay to be beaten, 67%. So the magazine reported like this: 67% of women in Kerala feels okay to be beaten by the husband. Do you find any oddness in this particular statement? I should say I was not the 61 in that. My friends would say they were not in that 67. So can you call it as a real sample of women? And with just 67 people, can you say that women in Kerala said it is okay? You cannot. So that is what it is called, the attitudes. So still people believe, there are a good majority who believe that it is okay to be beaten. Why? Because that is a right of the husband. No constitution has given any rights for man, or any rights particularly for any specific gender, that they have the right to do this, and that. Unless it is not constituted, I don't know why do we need to follow that. Then the right to be free from sexual and gender-based violences. Right to access sexual and reproductive health education and family planning information. There is no harm in talking about reproductive issues or sexual issues at home, in front of the parents, to the mother, to the father. There is no harm in that, because that is purely your health. You're talking about your health, and you need not have to be shy, or you need not have to keep an elephant in a room to show that there is something there. Actually, there is nothing. Unless and until you come up, you open up with your issues, the more you will have the right to understand, and the right you have to access the things. The right to enjoy scientific progress. You need to be alert about, you need not have to listen to me, or listen to Dr. Pushpa, or listen to Dr. Kavita ma'am. You need not have to listen to Venkatesh or anyone. You have your own choice, your own understanding to know the scientific knowledge. I'm sorry. You are being driven by a technologically driven society where you have everything on your fingertips. So enjoy the right to understand the scientific temperament behind each and every points that affect your personal life. There are a lot of cases. Dr. Madam has also pointed out some cases. Two significant cases that came out in the courts, which had paved way for the reproductive rights of women in India, are the Ramakant Ravi cases and the Dunabai cases. It is very interesting to know about these cases. Like
Ramakant Ravi versus the Union of India and others was on gross violation associated with sterilization throughout India. So the Supreme Court has limited the number of doctors, their pre-procedure checklist, uniform copies of consent forms, statistics, and inquire into violations and prosecution. And they also gave pathway to insurance policies. So this was one of the case that has created a lot of attention to discuss much about the reproductive rights of women in India. And another one is by Dunabhai with the state of Maharashtra, Madhya Pradesh. And it was on fact-finding in tribal area where an Adivasi woman had no choice but to give birth outside a hospital after repeated denial of medical treatment. So government health facilities functioned without blood emergency obstetric facilities, basic medicines, and adequate staff. So the High Court ordered state institutions to make it mandatory to immediate and specific changes regarding the staff, medicines, equipments, and facilities that would bring them up to the prescribed standards. The court also ordered the semi-government monitoring committee to have initially found violations investigate to ensure that the court orders were complied with. So just a woman, a tribal woman, had fought for her right to reproductive rights to have access to health facilities in the area which is approachable to her or accessible to her. So these two cases were marked as remarkable. There are many, but these two were very remarkable cases when you talk about the reproductive rights of women in India. And when you talk about the global standard, sexual and reproductive rights has become a part of sustainable development goals. Even we talk about them and at goal number 5, gender equality. More than 20 years after the International Cairo Conference has come in 1994, which first talked about the reproductive rights of women, even after 20 years, 25 years, full enjoyment of sexual and reproductive rights remains but an inspiration for millions of women and girls. Each day, we know that around 800 women die giving their life. Healthcare providers struggle with clinical decisions in the absence of clear evidence-based guidelines. More than 225 million women want to delay or avoid childbearing, but are not using modern contraception just because they live in the poorest countries or in the most disadvantaged groups. Okay. Global, when you talk about these global data again, 1 in 3 girls in developing countries is married before the age of 18, which is really a matter of concern about the health of the woman. Marriage, too early marriages leads to pregnancy soon, effectively closing the door to education and further opportunities for a better life. United Nations Population Fund, UNFPA, every year millions of girls face unintended pregnancies, exposing them to risk during childbirth, unsafe abortions, interfering with the ability to go to school. This is not the scenario only of developing countries, and developed countries are also not different. They are also still fighting for their rights on reproductive health. Even you take the example of European countries as well. The rights for safe abortions and such unintended pregnancies are still going on. What is the solution to all these things? A life cycle approach is essentially needed. As we said, it is a lifetime concern for both, not only of men and women, but for all gender, from infancy to old age. When you talk about infancy and childhood, 0 to 9 years, the selection of sex, genital mutilation, discriminatory nutrition and healthcare facilities are to be taken care of.
Adolescence, the childbearing age, 10 to 19 is unsafe abortion, sexually transmitted infections, HIV, AIDS, undernutrition. Nutrition plays a very crucial role. On the reproductive age group of 15 to 49, unplanned pregnancy, sexually transmitted diseases such as AIDS, unsafe abortions, pregnancy complications, malnutrition, which leads to low birth weight babies, especially iron deficiency anemia, which is very prevalent in India. Iodine deficiency disorders. Now we are very close to vitamin D deficiencies and all. If you take 1 out of 10 women are having vitamin D deficiencies. Early respiratory tract infections. Continuous respiratory tract infections are signs of poor immunity. Post-reproductive years, once you attain your menopause, the cardiovascular diseases, gynecological cancers, osteoporosis, osteoarthritis, diabetes. You need to think about all these things, lifetime health problems. And we have gender violences, depression, occupational and environmental health hazards as well. All these counterpart with the reproductive health of a person. So it's not merely about having a baby or not to have a baby. It's beyond and more than that. It's an wholesome approach which starts from day zero to your life. I hope I am clear to you. Once again, thank you so much for the opportunity provided. I would be happy if you can shoot me with some questions. I'm happy to answer if I have sufficient knowledge in that. Thank you. Thank you for the patient listening. Dr. Venkatesh, am I audible? Yes, ma'am. Ma'am, can we start with the question answer session? Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Dear students, if you have any question regarding ma'am's seminar, you can ask ma'am. Dear students, if you have any questions, you can ask ma'am. Is this question to me? What is female sterilization? Yes, ma'am. Okay, female sterilization is nothing but it's a permanent procedure to prevent pregnancy. It works by blocking the fallopian tube, so you can determine. So it acts as a permanent procedure to prevent the pregnancy process. It's a medical procedure. Thank you so much, ma'am, for your valuable speech. I hope your speech would be a fruitful one for our students and they would have enjoyed your session. Once again, thank you so much, ma'am. Thank you. Hello. I have a question. Hello. Yes. I have. Hello. Hello. Write in the chat. Sanjana, you can write it in the chat box. Ma'am. What section?
Okay, now we'll be proceeding to a third session. For our technical session 3, I am privileged to invite our next honorable speaker, Dr. S. Kavita Maithili ma'am, Associate Professor, Department of Home Science, Gandhigram Rural Institute, deemed to be University Gandhigram. She's having 22 years of experience in teaching. She has been awarded with Certificate of Appreciation from the President of Lisbeth University, Hanover, Germany. She has cleared UGC NET thrice. She is a gold medalist in MSc Home Science. She has received Best Shanti. She has published 1 book and 4 handbooks, 22 articles in the national. Thank you. Kavita ma'am, now it's over to you. Hello, good morning, all of you. Am I audible? Yes, ma'am, you're audible, ma'am. Good morning. So just now we are going to end the afternoon session. Good afternoon. Shall I make the presentation? Yes, ma'am, you can share it. Is it visible? Whether the screen is visible? Yes, ma'am, it's visible. Okay. Good afternoon, all of you. I feel very happy to meet you all on this online platform. And thank you, Principal Dr. H.K. Sharma, and organizer of the program, Dr. K. Venkateshan from JNRM, Port Blair, for giving me this opportunity. Hope students will be tired of the listening to the lectures continuously. Only 30 participants are here now. Anyhow, we have go into the third session. That is, my topic is on realizing reproductive choices and rights, abortion and contraception in India. So as most of you are students, my slide is will be a colorful one, and it will give you some basic information what you have to know about contraception and abortion. So if you take a country, it is, you can see the health of any society, it depends on health of women. The health of any society, it depends on health of women, and in a society, women's health, it matters most. So only when you have a women's health, you give importance to women's health, that society can survive better and their society can succeed better. So if you see the sustainable development goals also, every day you can see 830 women die from preventable causes related to pregnancy and childbirth around the world. Imagine, see, about 830 women throughout the world are dying daily because of the pregnancy and childbirth related causes. So this stresses the importance of reproductive health. Hope the earlier sessions from Dr. Pushpa ma'am and Dr. Chitara Balaman will enlighten you about the basics of reproductive health and reproductive rights. And here I am giving you the definition. The definition about
reproductive health, you know the health is a state of physical, mental, and social well-being. When you mean reproductive health, okay, when you mean reproductive health, it refers to the state of well-being in reproductive system to its functions and process. It specifically means a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of diseases and infirmity in all matters related to reproductive system and to its functions and process. So this is the basic thing what you have to know about reproductive health. It's a health well-being which is related to the reproductive system. And Chitara madam had explained you about the reproductive rights, the various rights. So you should know, as an adolescent, as a woman who is getting to married, you should know what are the reproductive rights you have. Reproductive rights, you see, the basic right of all couples. Okay, reproductive rights, when you say it, it is the basic right of all couples. Okay, invariably, the girl or a boy who lives in rural or urban areas, or wherever he is, he has a right to decide freely and responsibly about the spacing and timing of their children, childbirth, okay, spacing of childbirth, and they have the right to get informations, and they have the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. So first you have to realize, okay, as a youngsters, you have to realize you have the right to decide about when to have the baby. You have the right to decide about whether to go for abortion if it is medically and you have the right to decide about contraception, what you are going to use, what type of contraception you use, and you have the right to education, getting education related to the reproduction, and getting services, okay, getting medical services related to the reproductive area. So when you say reproductive rights, okay, what are the reproductive rights? Just for rights for women, you say, as I said earlier, each and every woman has the right to legal or safe abortion. Okay, has the right to legal and safe abortion, and she has a right to birth control. She has the right to decide upon which contraceptives to be used and when to have the baby and how much time of spacing so they have between the baby. They have the right to birth control, and they have the right of access quality reproductive health care. It is the responsibility of the state. It is the responsibility of the government to provide quality reproductive health care services to all women in our country. And he or she has a right to education in order to reproductive choices. Okay? So it should be informed about, right, to get the information about the reproductive choices and everything. So you should realize that all the women, rich or poor, rural or urban, educated or uneducated, all the women have the right, reproductive right, and it is the primary duty of the government to ensure that every woman survives pregnancy and childbirth. Okay, so our primary focus is to reduce the maternal mortality or morbidity rate which arises due to pregnancy and childbirth. So you are aware of what is reproductive health. So when I say reproductive health, it refers to the state of well-being, physical, mental well-being, and especially which is more related to your reproductive system. And you say, what are the reproductive rights the women have? The women have the right to choose the contraceptives, birth control methods, and right to get education in related to the reproductive choices. Now you should know what is reproductive choice. Okay, what is reproductive choice? The right to reproductive choice means that
women have a right to choose whether or not to reproduce. Okay, that is when to have a baby, including the right to decide whether to carry or terminate an unwanted pregnancy. Okay, whether you want to terminate the pregnancy, go for safe abortion, very safe and legal abortion, and they have the right to choose the preferred method of family planning and contraception. So each woman, they have the right. It is the body and it is the choice to decide upon when to have the baby. But what is actually happening in our society? Do the women enjoy this reproductive rights? What actually happening in the society? Whether women are enjoying these rights, or do they have any choice to select when to have the baby, other things? Can any one of you react? What is happening in the society? Do the women have reproductive choices? Hello, am I audible? Yes, ma'am, we can carry on. So what happens in the society actually? Actually, women, this is a male group which dominates, whether or the mother-in-law in the family or the family members, they are selecting the reproductive choices, when to reproduce and other things, and type of, even in using type of contraceptive devices. The women are not given a choice to select when to have the baby or what type of contraceptives to be used. So the young women, the young girls, you should always remember that it is your body and it is your mind, it is your life, and you have the right and you have the choice to decide upon these reproductive things. Okay. So before going to abortion, let me say about contraception. What is contraception? Okay, what is contraception? So contraception, you say it's a birth control and it is anti-conception. You are preventing the pregnancy. Okay, you either a method or a device, you are preventing pregnancy or you are postponing the pregnancy. Okay, suppose if a girl is get married at the age of 18, okay, in a college school, if the girl is getting it's a age of 18, even though legally she is legal age of marriage is 18, but she is better it's to have the baby only between after 21 years. Okay, always for women it is better to have the baby between 24 to 27 years. Okay, so she want to postpone her pregnancy. So what type, otherwise if the girl want to continue her studies, she has to go for post graduation, or she is engaged in a career and it is a very peak time where she can't have the baby at that time. So due to various reasons, even after marriage, the girl should postpone her pregnancy. Okay, or because of health reasons. It may be either due to health reasons or academic reasons or career reasons, or even due to the family reasons. The economic conditions of the family may not support to have a baby. So because of any reasons, the girl may like to have postpone the pregnancy. So there are a lot of contraceptives are available which she can use to postpone her pregnancy. The first thing is she should be aware of that. Okay, the first thing is aware of that, because we have noticed cases. We have noticed cases soon after marriage, within 2 months or 3 months, this girl is conceived and the girl will be facing lot of difficulties. Okay, right of difficulties because she is not aware of that. So you have to, the students, they should be aware of the various contraceptive methods so that she will have a choice to have the exercise, the reproductive choice. So what are the contraceptive methods? Okay, what are the contraceptive methods? The contraceptive methods, there are various methods are available. Here I am mentioning you about the 3 major things. That is the spacing methods, permanent methods, and emergency contraceptive pills. Okay, so there are, you can see it is classified this contraceptive methods. Here it is classified into spacing, that is the temporary methods, and then it's a permanent methods, and you can have the emergency contraceptive pill. Okay,
So what is spacing method? What is spacing method? Once a girl gets married and they want to postpone the baby, so they want to for 1 year or 2 years, they want to space the childbirth. Okay, otherwise they have one baby, or they want to have the baby after 3 years. So for 3 years they have to postpone the pregnancy. So during this temporary things, if they have the thing, that is what you can spacing method, and these are reversible methods. Okay, they are reversible methods based on individual's choice. Okay, based on individual's choice, the girl can select whether to adapt it or not. Okay, the common spacing method which is used in our country is the oral contraceptive pills. Okay, it's the oral contraceptive pills. So it is available in the day of Maladi or Chaya. It's available in all the primary health centers. So this oral pills, contraceptive pills, it helps to women to postpone their pregnancy. And the condoms, which are used by men, condoms is also used to postpone the pregnancy, and condoms also help to prevent the STD diseases. Okay, and then intrauterine contraceptive devices, IUDs. Okay, intrauterine contraceptive devices where they are inserted inside the uterus, which prevents pregnancy. So you can have that type of IUD devices either for which are effective for 10 years or 5 years. Okay, while spacing of childbirth, soon after their childbirth, they will have this type of intrauterine devices so that they can space the next childbirth. Okay, and then the modern methods, you have contraceptive injectable also. Okay, contraceptive injection where they can have the injection intramuscular, and this will prevent pregnancy or postpone pregnancy for 3 months. Okay, so this type of contraceptive pills, oral contraceptive pills and contraceptive programs are more common in our country. Okay, then about the permanent methods, the earlier is about the spacing methods, and now it's about the permanent methods. Now they want to go for family planning, that is they had 2 babies and they don't want to have any more babies, so they plan to have for a sterilization method. They go for a permanent method. It is a irreversible one where you say female sterilization is also there, male sterilization is also there. Female sterilization, you call it as tubectomy, and male sterilization, you call it as a vasectomy. So in case of tubectomy, you can notice the fallopian tubes either cut or tied together so that the sperm and ovum will not meet and they will not have the conception. And in vasectomy, you can see the vas difference, it is cut up so that the sperms will not be ejaculated out. So these are the 2 permanent methods, female sterilization and male sterilization. So permanently, those who don't want to have baby and those who had the establish the family, they can go for permanent methods. And also you have emergency contraceptive pills, and this is called as e-pills, and it is introduced in the year 2007 to 2008. Suppose if the couple, they had the unprotected sex, and only after the having the sex, they are realizing they don't want to have the baby, then within the 72 hours they can have this e-pill, emergency contraceptive pill, so that the pregnancy will be avoided. So these are the 3 common contraceptive methods which are available to all the women. Okay, which are available to all the women in India. So where it is available, where will I get my pills? Okay, where will I get my pills, that oral contraceptive pills, or where will I get my injection? All these spacing methods are available in the village, the primary health centers. Okay, all these are available at the primary health centers. So you can engage when you are going for your field visit, when you are going to the extension work, you can
create awareness among women, the young mothers, about these various contraceptive methods which are available. And you can ask them to contact the primary health centers or the sub centers in the village. So at free of cost, they will get the pills, oral contraceptive pills. And even the ASAs, the trained health nurse in the village, she will also help the women to get this. Okay. And the primary health center level, you can go for the permanent method sterilization. It is done at the primary health center level. So it is available. These services, health services, are available on all rural and urban areas. You have to create awareness about this availability. Only because of lack of awareness, about this support services, and a lack of taboos, social taboos which prevalent among the rural community or among the women, the people are going for unintended pregnancies. They don't want to have the babies, but they'll conceive. Okay, so that type of things are go. This can be avoided if you give awareness about them, if you educate the women to set the reproductive choices. So this is just to how many of them are sterilized and how many of them are using IUDs and injectables and oral health pills. You can note, you can see the figures here. So the using of oral contraceptive pills, it is on increasing, and IUD is again thing. Again, you can notice in case of contraception, while using the contraceptive methods, okay, deciding about the contraceptive methods, again, the responsibility or deciding when to have the baby or preventing conception, the responsibility of preventing conceptions, everything is on the side of women. Only women is responsible for all these things. Men will have a very meager role. Okay, even you can notice the sterilization, it is given common, but if you notice, more of tubectomies are taking place in the country than the vasectomy. Okay, vasectomy, it's a sterilization, male sterilization method, but the men are opting for vasectomy is very few. So it is the burden of the women to have reproductive choices also, and they have to take the oral pills and everything. Okay, so if the contraceptive methods are not used or due to any other conditions, okay, the women get pregnant and she don't want to have the pregnant, then she can abort the baby. Okay, she can abort the baby, and that's what abortion. When you say abortion, it uses medicine or surgery to remove the embryo or fetus or placenta from the uterus. Okay, it is the procedure, legal procedure, and it should be done medically to remove the embryo or fetus or placenta from the uterus. Even though these abortion services are available in villages, many women, knowingly or unknowingly, they are going for unsafe abortion. Unsafe abortions are also very common in India. So what do you mean by unsafe abortion is? That is, the abortion is carried out by untrained persons. Okay, abortions are carried out by untrained persons and in the environment where lacking minimum medical standards. Okay, so when the women, they go for this type of unsafe abortions with the local healers or with the local procedures, then it may result in death of women. Okay, it may result in death of women. In India, around 6.4 million abortions are performed annually, out of which 3.6 million, okay, only 56% were unsafe abortions. So this unsafe abortions, it accounts for 8 to 20% of all maternal deaths. Okay, so the main reasons, if you want to find out the reasons for unsafe abortions, is about the lack of awareness about the contraceptives, the social taboos or myths which is prevailing in the society, and people's fear
People fear even teenage pregnancies due to the number of increasing teenage pregnancies, all the things, and only going to the unsafe abortions, which is thing which bothers about the women's health, and it is one of the reason for maternal deaths. Okay, so when you look into the guidelines of WHO, okay, what WHO says? Abortion is a common health intervention. Okay, that is again a myth. Abortion should not be done. Okay, even if it is dangerous to women's health, even if it is dangerous to the mother, abortion should not be done. So this baby is given by the God, so man should not abort it. Like that of myths are prevailing in the society. But you have to, women, they have to understand it is a common health intervention. Okay, and it is recommended by WHO and appropriate to the pregnancy duration, and with necessary skills, with the persons trained in abortion, they can do the thing. Okay. So 6 out of all unintended pregnancies end in an induced abortion. Okay, 6 out of 10 all unintended pregnancy, they want to get thing, they end in an induced abortion. And here also at the world level, there is a 45% of all abortions are unsafe. Okay, about 45% of all abortions are unsafe, and of which 97% take place in developing countries. So it is while creating awareness among the public, among the women, young mothers, you should create awareness about the ill effects of or what are the complications of the unsafe abortions. How to encourage mothers to go for the safe abortion, to visit hospitals for abortions. Okay, because unsafe abortion is the leading cause of maternal death and maternal morbidity. Okay, it can lead to physical and mental health complications, and it also leads to social and financial burdens for women and community. So lack of access to safe, timely, affordable, and respectful abortion care is a critical public health and human right. It is not realized by many people. They used to know it is a critical public health and human right. Abortion, it is the right of women to get aborted under medical terms. Okay, and in reasonable grounds. So unsafe abortions, this should be avoided. So what will happen if a woman is going for unsafe abortions? Okay, if a woman is going for unsafe abortion means, so here it will lead to incomplete abortion. That is, it is failure to remove or expel all the pregnancy tissue from the uterus, and which may lead to some infections, and there will be heavy bleeding, hemorrhage will be there, and uterine perforation. Okay, due to the unsafe abortion by the untrained people, it may lead to uterine perforation, and the genital tract or internal organs may get damaged due to the dangerous objects inserted into the vagina. Okay, so the physical health risks. Okay, the women, girls should you should be aware of what are the health risks which are associated with unsafe abortion and how it should be prevented. So young girls, you have to understand that abortion, it is my human right. Okay, even and it is a legal right in India, and a woman has a right to do abortion if, okay, if a woman has a right to do abortion if the continuous pregnancy would involve risk to the life of the pregnant women greater than if the pregnancy were terminated. If the pregnancy, if it risks the life of pregnant women, okay, then if the women can go for termination of pregnancy or abortion. Okay, and the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical and mental health of the pregnant women. Okay, so if the pregnancy, it affects the physical and mental health of the women, and if the termination, it gives relief to the women, then you can say you can go for the abortion. Okay, and then the continuation of pregnancy would involve risk
greater than if pregnancy were terminated or injury to the physical and mental health of any existing child of the family of the pregnant women. So this pregnancy, if it affect the health of any existing child, the previous child, okay, the previous child in the family, if it is gets if it affects the physical and mental health of the existing child, then under the doctor's advice, and they can go for the abortion. And if the child, the newborn, is will have some physical or mental abnormalities, the fetus has some physical or mental abnormalities, in such a conditions also you have to go, can go for the abortion. Okay, so only under the conditions when if that pregnancy affects the life of the mother, or if that pregnancy is have some fetal deformities and other things, then it is the right of the women to go for abortion in medical under the having some medical services, proper medical services. Okay. Can you give me any cases where unsafe abortions takes place in your area? Can anyone of you, have you heard about the unsafe abortions and how this unsafe abortion affect the health of the people or health of women in that area? Can anyone of you share some experiences? Students, are you there? Yes, ma'am. Have you come across any incidents of unsafe abortions? What is unsafe abortion? What is unsafe abortion? Dear students, you can please answer the ma'am. She's asking questions. Maybe they may feel hungry. Okay. So there are cases in villages you can notice where women either due to teenage pregnancy or due to some other reasons, they are going to the local healers where they'll be using some herbs or some poisonous materials. They'll insert the herbs inside the vagina of the women, which will damage the vagina or uterus. Okay, there are these type of cases are very common in rural areas. So students should be aware of that. They have create awareness among the people that abortion is a human right. It is legal in India under these conditions. If that abortion will affect the if that pregnancy affect the physical and mental health of the women, or if that pregnancy lead to fetal abnormalities or deformities, then they can go for the abortion legally. Okay, so we have the laws that medical termination of pregnancy. Medical termination of pregnancy. So medical termination of pregnancy, you should be happy that India had this act, Medical Termination of Pregnancy Act, even in 1971. Okay, India has Medical Termination Act even in 1971. And in 2021, last year, this amendments are made in this act, and it is approved in the Lok Sabha. Okay, so which makes abortion is legal. Okay, abortion is legal in India. Even in some countries, they are not going for legal abortions. Okay, so what are the salient features of medical termination of pregnancy? If you look into the salient features of this act, salient features of
Medical Termination of Pregnancy Act and its recent amendments. Here it has enhanced the gestation limit, okay, gestation limit from 20 to 24 weeks. Earlier, as per 1971 Act, it was 20 weeks. Okay, abortion can be done if it is at 20 weeks, but now it has increased to 24 weeks. Okay, 24 weeks. So it is especially for cases like survivors of rape. It is especially in the cases of survivors of rape victims and other vulnerable women, differently abled women or minors, children before 18 years. So in that cases, the upper gestation limit, okay, that is the pregnancy, the duration of pregnancy is between 20 to 24 weeks, then the women can go for abortion. Okay. And in 1971 Act, only one provider will be required up to 20 weeks of gestation. Here also there will be that one provider means the medical consultant. That's be one provider. And if it crosses the 24 weeks, then permanent and two providers, two medical doctors will be consulted before going for the abortion. Okay. And if it is in the case of fetal abnormalities, okay, if it is in the fetal abnormalities and if it is diagnosed by the medical board, then there is no gestation limit. Even after 24 weeks, they can go for abortion. Okay, so it is based on, it should be based on the recommendations of the medical board. So those women, those who go for abortion, the name and other particulars of the women should not be revealed, okay, except to a person authorized in any law for the time of being in post. So you are women are the medical personnel, they are not supposed to reveal the details of the women who go for abortion. So these are some of the salient features which you can notice in the amendments. That is, in 1971 Act, it is 20 weeks of gestation period. Only then you can go for abortion. Here it is extended till to 24 weeks. And in case of fetal abnormalities, the medical board can, based on the recommendations of the medical board, they can go for abortion at any time. There is no upper gestation limit. So till now we are saying about what is the reproductive health, what are the reproductive rights of women, and what are the reproductive choice the women should make. Okay, what are the reproductive choice what a women should make, and what are the various contraceptive methods, okay, whether the temporary methods or the permanent methods, or the contraceptive methods you can decide. And you are saying reproductive health is a life cycle approach. Okay, already madam explained about it. The reproductive health is a life cycle approach, and you need these services, reproductive health services, for from birth to death. Okay, so for your children, with those who enter the marriage, they need temporary method spacing of childbirth and other things. They need contraceptive devices. And those who are after childbirth and other thing, they will for planning the family, they need the permanent methods of contraceptives. And all this use of contraceptives is determined by the social myths, social taboos, the education of the women, the awareness level of the women, the availability of services to women, and the support both the women receive from the family and the support of the couple, okay, the partner, life partner. All this determines the reproductive choice of women. But the main thing is the women should realize it is her right. It is the right of the women to decide when to have the baby. It is the right of the women to decide what type of contraceptive devices to be used. It is the right of the women to decide whether to have the baby or to go for abortion when it is a threat, when it threatens her life. Okay, so the women should be empowered enough. The women should be educated. The women should be educated in the field of this, and women has the right to get informations in this regard.
Okay, information regarded to sexual and reproductive health. So, as you are students, I like to inform you, students, while you are going to the field, well, first thing is first you have to apply yourself. You should get aware about all these things. You have to aware about the facilities which are available, and you should equip yourself about the knowledge about the sexual and reproductive health. And second things, whatever the knowledge you gain and whatever things you have learned, you have to take this to the rural areas. You have to make the rural adolescent girls. You have to make the rural young mothers. Okay, and it's a menstrual hygiene is also one of the part. Okay, they should also educate the young adolescent girls about the menstrual hygienic practices, and you have to inform the young mothers in rural areas. Okay, young mothers in tribal areas about what are the reproductive choices which are available to them, and you should be inform them about the reproductive rights, what you have learned. You have to inform the women about reproductive rights, and you should also help them to understand where are these facilities are available, how to avail the facilities in order to improve the sexual and reproductive health. So if you do this, and you can also undertake small research studies. Okay, you can also do small research studies. What are the factors which influence the selection of contraceptives, or for what are the factors which influence the um, uh, unsafe abortion, going for unsafe abortion, who are the people, those who are going for unsafe abortion, and how to prevent it. This type of small researches you can do in your area. So by doing this type, creating by this type of awareness, by ensuring that women are getting adequate health, quality health services, and empowering women through all this, giving them about knowledge about the right and other thing, will by 2030 we can ensure universal access to sexual and reproductive health care services. Okay, so including for family planning, information and education, and the integration of reproductive health into national strategies and programs. Okay, we wouldn't achieve the complete the target of Millennium Development Goals. Now we are moving towards the Sustainable Development Goals. Only if people from micro level to the policy level, if the people work together and they work together to improve the universal access and sexual and reproductive health services, we can achieve this target. So let us all march towards to provide a conducive environment for women to ensure her reproductive choices. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable speech. Thank I you. request the participants that they may ask question to ma'am if any doubts are there. Okay, I hope there are no doubts. Thank you so much, ma'am. We'll wind up the third session. And your speech was really a valuable one. I hope it would be fruitful for our dear students. I request the students to join the Zoom meeting with the same ID again by 1:45 after the lunch break. Then we'll be starting with the next technical session. Clear? Thank you. Once again, you may please join the technical session by 1:45. Thank you.
Sau này chỉ có làm, chỉ có cần cù siêng năng, chỉ có làm những cái loại không làm có ăn đấy, ăn cơm đấy là thế. Sau
आवाज नहीं आता बात करता वाला। किसका आवाज नहीं आता? उस लोग का पता नहीं मैं क्या करके रखी है। जल्दी मीटिंग में है। मैं आवाज नहीं सुनाई देता मेरे को। ये देख जरा बटन। हेडफोन എടുക്കണം നല്ലത്.
Good afternoon, respected speakers, HOD sir, principal sir, my dear students. Can we start the session, sir? Am I audible, sir? Myself, Mrs. Poonam Ajay Singh. Hello. Yeah, sure. I think I'm Dr. Abhijit Roy here. I'm ready with this. Okay. A very warm good afternoon, sir. Myself, Mrs. Poonam Ajay Singh. On behalf of JNRM College, I invite you for the post-lunch technical session. And before I start, I would like to introduce you to my dear students. Dr. Abhijit Roy, sir, is Deputy Director Health, Director of Health Services, Andaman and Nicobar Islands. And sir is going to take the session after lunch. And he will be speaking and enlightening us on women reproductive health care, a way forward. Thank you. Welcome to the session, sir. And the session is over to you. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Am I audible to all? Yes, ma'am. Yes, Somebody sir. can respond. Some audience can respond. The students kindly sir, respond to sir. बच्चे सुन रहे हो मुझे? So I will request to please present my this one's slides. Poonam madam. Yes, sir. Please display my slides. Sir, your slides are not visible, sir. Not visible. No, actually I've given the slides to Mr. Venkatesh. Okay. But he's not present in the department. He's just gone out. I think connectivity is not there, sir. I don't think he can hear you. Okay, then let me get my this one presentation for you. Students? Just 2 minutes. I'm just 2 minutes. Yeah, no problem, just sir. adjusting No my problem, slides, sir. please. Take your time, sir. We are waiting. I just say a few words to the students. Today there was a webinar on reproductive rights of women. A lot of students must have joined post-lunch. So I would give a small introduction. And before I give, I'll just request, sir, when you are done, kindly tell me, sir, then I can hand over the session to you. Students, today there was a webinar on reproductive rights of women, expressing autonomy of choice with special reference to Andaman Nicobar Islands. And it was in collaboration with National Commission of Women, NCW, and our department, Home Science Department, headed by our respected Dr. K. Venkateshan, HOD sir, with the cooperation of our respected principal, Dr. H.K. Sharma. We started off the webinar in the morning, and in the morning there were 3 technical sessions, and the first speaker for our technical session was Dr. K.S. Pushpa, and she spoke very inspiring speech. She had a very inspiring session she had in how to promote the reproductive rights and gender equality. And the second session was headed by Dr. Sitara Balan B. And ma'am spoke on the rights, reproductive rights, national and international, which is very important, as all, even the girls and the boys, both the genders should have an idea on that.
And I'm just trying to brief you all on this before our respected Dr. Abhijit sir set with the slide, so that you all don't get bored and waiting. So I think sir is already getting ready with it. So before he starts, I'll give you a short information about Dr. S. Kavita Maithili. She spoke on realizing reproductive choices and rights of abortion and contraception in India. And the students who have joined in the morning, I hope you enjoyed the session and you've gathered enough knowledge to protect yourself for your future life, be it any gender. And just to give few minutes and the technical session will begin as sir is getting set for his, getting his slides ready for you all. And please cooperate, and if you have any queries, kindly feel free to ask sir, and feel free to clear your queries, because he'll be speaking and he will be guiding you all throughout the session. Just give few seconds, and rest of the students, please tell your friends also to join as much as possible, so that you can utilize and take advantage of this beautiful and a very knowledgeable session, webinar on rights of special rights for choice of autonomy of choice. You all will have reproductive rights of women. Thank you. Please cooperate. Sir, yes, it is visible, sir. Your slides are visible, sir. Sir, Abhijit, sir. Thank you. My screen is visible now. If anything Yes, goes sir. wrong, please tell me. So, good afternoon, students. Namaskar. मैं डॉक्टर अभिजीत रॉय, मैं डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विस हूँ. मोस्टली आप मुझे जानते हो एज नोडल ऑफिसर कोविड के नाम से, इसमें परिचय से. तो आज मुझे बताया गया था कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके जो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इस अंडमान सोसाइटी में, इस इंडिया में, उस विषय में आपसे बात करूं. तो मेरे से पहले जितने भी स्पीकर्स रहे होंगे उन्होंने एटलीस्ट आपको बताया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है. जस्ट इंट्रोडक्शंस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो होता है फीमेल्स में, वो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपका एक जो 15 से 45 साल के बीच में जो लेडीज होते हैं, उनके जो भी हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसको एक मुख्य एक रूप मानते हुए हम इसको कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ. Sir, we cannot hear you, sir. Yeah, reproductive. Can't hear you. Hello, sir. You're not audible, sir. Suddenly. One sec. Hello. Is it audible now? Yeah. Now it is audible, sir. Thank you. Audible. Thank you very much. Okay. So ये जो होती है आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके इम्पोर्टेंस ये है कि जो फीमेल्स है उनके बहुत सारे रिप्रोडक्टिव प्रजनन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो यंग एज में होती है आपका इंजरीज, और दूसरा होता है इन्फेक्शंस. जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उसका एक इश्यूज होती है, जिसको प्रिवेंट करना हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में. और अगर इस चीज को हम अभी से सॉर्ट आउट नहीं करेंगे तो आपको बाद में बुढ़ापा में जाके एक लॉन्ग टाइम कॉम्प्लिकेशन दिख सकता है, जिसमें कि आपको HIV एड्स, दूसरे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, जो आपके प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपका एक प्रोट्रूजन हो जाना, उसको खराब हो जाना, या फिर आपका इनफर्टिलिटी हो जाना, प्रीमेच्योर बर्थ, बच्चे का बेबी बर्थ होना, या फिर बच्चा मरा पैदा होना, जिसको स्टिल बर्थ बोलते हैं. ये सारा चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम लोग बराबर नहीं देख सकते हैं. तो सबसे बड़ी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू होती है वो होता है आपका पेरी पिवटल एज से. अगर प्यूबर्टी को माना जाए तो प्यूबर्टी को WHO मानती है, जो 11 से 19 साल के बच्चे हैं उनको हम प्यूबर्टी, उसको हम बोलते हैं आपका एडोलसेंट पीरियड.
और एडोलसेंट पीरियड में जो चाइल्ड बियरिंग एज करीब करीब 15 साल से लेके 45 वर्ष के आयु वर्ष के सीमा के महिलाओं पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन होता क्या है, जो पेरी पिवटल एज या पेरी आरसीएच एज जो होता है, जो 11 साल के बाद जो शुरू हो जाती है आपके, ये जो एज में क्या होता है कि अगर आपको कोई मालन्यूट्रिशन होता है, जैसे आपको अगर एनीमिया होता है, एनीमिया का मतलब होता है कि खून की कमी, जिसको हीमोग्लोबिन का कम होना बोलते हैं। अंडमान में अगर आमतौर में देखा जाए तो लोगों को बोलते हैं कि आपका खून कितना 11 है तो आप खुश हो जाते हो। मैं बताना चाहूंगा बच्चों की आप खासकर जो लेडीज है उसका 13 ग्राम खून और जो जेंट्स है उसका 14 ग्राम खून जब तक ना हो आप बच्चा पैदा करने का ना सोचे। जितना अच्छा खून होगा उतना अच्छा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा, इंटेलिजेंट पैदा होगा, स्मार्ट पैदा होगा, एक्टिव पैदा होगा। तो एक बहुत बड़ा इश्यूज है। तो क्रोनिक मालन्यूट्रिशन, अगर माँ को बच्चे को मालन्यूट्रिशन होता है, बड़ा होकर माँ बनेगी, बच्चे भी मालन्यूट्रिशन हो जाएंगे, उसके बच्चे मालन्यूट्रिशन हो जाएंगे, तो इस तरीके से क्रोनिक साइकिल चलता रहेगा। दूसरा जो इशू रहेगा आपका मेंटल हेल्थ, उसमें क्या होता है कि आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओगे एक मालन्यूट्रिशन में। दूसरा, अगर आपका रहन सहन, खान पान, एक्सरसाइजेस, आपकी जो सेल्फ एस्टीम नेचर है उसको अगर बरकरार नहीं रखा जाए तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली डिविएट हो जाओगे और अपने आप को हार्म कर लोगे, अपने आप पे एक ऐसे विशेष साइकिल में फंसा लोगे जहाँ पे आप कहीं ना कहीं सेक्सुअल प्रेमस्कुसिटी, उम्र से पहले आप सेक्स में इन्वॉल्व होना, प्रीमेच्योर बच्चे हो जाना, आपको कभी आउट ऑफ द मैरिज, नॉट आउट ऑफ द मैरिज, आउट वेट लॉग, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकता है। इस बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे ऐसा होगा जब जैसे जैसे एज बढ़ता रहेगा आपके अंदर स्ट्रेस लेवल और मेंटल इलनेस बढ़ता रहेगा। सबसे बड़ी चीज और एक चीज होती है हमारे आरसीएच में या रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ में है क्या, सोशल वेलबींग। सोशल वेलबींग में अंडमान में एक बहुत बड़ा इश्यूज नहीं है, जहाँ पे कुछ पैट्रियार्कल सोसाइटी कहाँ पे और कुछ कंजर्वेटिव एंड एरिस्टोक्रेटिक कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहकर होता क्या है कि महिलाओं को एकदम पर्दे में रखा जाता है, उनको एकदम स्ट्रिक्ट रखा जाता है, उनके बहुत सारी चीजों को मानी नहीं जाती है, उनकी सुनी नहीं जाती है। तो उससे क्या होता है कि उनका सोशल पार्टिसिपेशन कहीं ना कहीं लैकिंग हो जाता है, घर का डिसीजन में उनको इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कहाँ शादी कराना, किससे शादी करना। तो बाद में क्या होता है कि अगर बाई चांस ईगो हर्ट होने लगे तो होगा क्या, लड़की शादी तो करा दी किसी के साथ, बाद में अगर उनके साथ अगर नहीं बना तो जिंदगी भर जो ताना बाना चलते रहता है जिंदगी में वो चीज होते रहेगा। उसकी वजह से क्या होगा, आपके बच्चों का स्वास्थ्य जो है वो कहने के मार खाएगा। नाउ जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, it helps in society to prevent the spread of various sexually transmitted diseases and impart ability to produce offspring having better survival rates. जो रिप्रोडक्टिव सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगा, जो समाज में आपको करना क्या है कि आपका ये डिजीज को, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जो गुप्त रोग जिसको बोलते हैं, गुप्त रोग को रोकने की कोशिश करेगा अच्छा से, अगर आपको जानकारी हो। दूसरी बात, आपके जो बच्चे होंगे फ्यूचर में उसके सर्वाइवल रेट भी बढ़ जाएगा। मैंने पहले ही बोला था कि अगर आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, आपको अगर क्रोनिक मालन्यूट्रिशन है, हीमोग्लोबिन कम है, तो बच्चा मरा पैदा होना, बच्चा पहले पैदा होना, बच्चा कमजोर पैदा होना, ये सारा चीज होगा। ये सब चीजों को अगर ठीक से देखोगे तो एक तो आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से बचाएगा, न्यूट्रिशन को बढ़ाएगा, आपके बच्चे का सर्वाइवल रेट बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जहां पर आप सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को रोक सकते हो, सेक्सुअल हेल्थ को अच्छा कर सकते हो, तो वहां पे आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी को आप रोक सकते हो। ठीक है, इस विषय में हम बाद में बात करेंगे कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसी रोकोगे। तो मैंने पहले ही कहा था कि जो रिप्रोडक्टिव एज होता है 15 इयर्स टू 45 इयर्स एंड बियॉन्ड होता है, जब तक कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म चलते रहता है आपका ना। सेक्सुअल लाइफ क्या होना चाहिए आपका, सेक्सुअल लाइफ का क्या गोल और टारगेट होना चाहिए। सबसे पहला होता है कि सेफ एंड फुलफिलिंग सेक्स लाइफ। ना व्हाट इज सेफ सेक्स एंड व्हाट इज फुलफिलिंग सेक्स लाइफ। तो सबसे पहला बात होता है कि फुलफिलिंग सेक्स लाइफ में और सेफ सेक्स होता है कि जहां पे आप एक कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना लाओ, मल्टीपल सेक्स पार्टनर के साथ कुछ होने के संबंध असर चलते कहीं ना कहीं आपको कोई बीमारी ना आ जाए, जो खतरनाक गुप्त रोग ना आ जाए। और सबसे बड़ी बात है कि एक खुशनुमा, फुलफिलिंग का यहाँ पे अर्थ होगा खुशनुमा आपका एक सेक्स का लाइफ हो, ना कि आप जस्ट हैविंग मल्टीपल पार्टनर्स। कब किसी के साथ HIV एड्स हो गया, कभी आपको सिफिलिस हो गया, कुछ और कुछ हो गया। बाद में ऐसा हो जाता है कि ज्यादा आप सेक्स पार्टनर करने से क्या होगा कि बाद में जाके आपको इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होगा। आप जो पिल्स खाते हो, कभी कभी यूज करते हो, पिल्स में आपको बाद में क्या होगा, पहला बच्चा होने में आपको तकलीफ हो जाएगा, ये सारा चीज होगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बच्चे प्रॉब्लम होगा
कि आप अगर 22 साल से पहले, मैं इस फिगर को बता रहा हूँ, 22 साल आप ध्यान रखिएगा, अगर आपने सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूसिटी में इन्वॉल्व हुए, मतलब 22 साल से पहले आप सेक्सुअल एक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हो, तो होता क्या है कि आप मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर बनाने में कहीं ना कहीं आप, हो सकती है आप मल्टीपल पार्टनर बना ले, आपको एक पार्टनर से आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन होगा नहीं। जो लोग गलत मूवीज देखते हैं ऑनलाइन, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम होता है, उनको सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन होता नहीं है। इसकी वजह से ये सब चीजों को आप अवॉइड कीजिए। 22 साल से पहले कोई सेक्स नहीं, दोस्ती अलग बात होती है। दूसरी बात है कि कोई भी ऐसा गलत चीज ना करे, ना देखे, जिससे कि आपको सेक्सुअल फुलफिलिंग या सेक्सुअल डिजायर फुलफिल करने के लिए आपको मुश्किल हो। तो उससे क्या होगा कि आपका अनसेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, घर में झगड़ा बढ़ेगा, ठीक है, आप खुद सेटिस्फाइड कुछ चीजों से रहोगे नहीं, वो चीज। नेक्स्ट जो गोल होगा आपका, कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, आप बच्चा पैदा करने में सक्षम हो। आज के डेट पे मेनलैंड में जाओगे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में खुला है, गायनेकोलॉजी हॉस्पिटल खुल रहा है। आधे लोग जो शादी कर रहे हैं, जिसका लेट मैरिज हो रहा है या जिसका सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूसिटी पहले हो रहा है, जिसका माल न्यूट्रिशन जिसके अंदर है, ऐसे लोगों को इनफर्टिलिटी का बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। लोग भाग रहे हैं, मेलैंड लाखों करोड़ों खर्चा कर एक बच्चा सरोगेसी से करने के लिए, टेस्ट ट्यूब से करने के लिए, आईवीएफ से करने के लिए। तो ये सारा चीज प्रॉब्लम होगा। तो आपका गोल होना चाहिए कि कैपेसिटी रिप्रोड्यूस, मैं बच्चे को पैदा कर सकूं, टाइम पे पैदा कर सकूं, अपने मर्जी के हिसाब से पैदा कर सकूं। इसका सबसे बड़ा इशू रहेगा कि आपका सेक्सुअल लाइफ आपके कंट्रोल में रहे। दूसरा, आपका न्यूट्रिशन और एनीमिया कंट्रोल में रहे। आपकी शादी का एज ठीक ठाक हो। तो देखोगे इनमें जो सिस्टमेटिक वे में जाएंगे, उनके अंदर ये इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट होता है कि फ्रीडम टू डिसाइड इफ एंड व्हेन यू वांट टू रिप्रोड्यूस एंड हाउ ऑफन यू टू डू सो। तीसरा जो गोल होना चाहिए कि मैं कब बच्चा पैदा करूंगा, कितने पैदा करूंगा, कितने गैप में पैदा करूंगा, ये मेरे हाथ में रहना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि जो टेम्पोररी फैमिली प्लानिंग मेथड, टर्मिनल फैमिली प्लानिंग मेथड, इस चीज को हम लोग कभी भी ये रखते हैं, इसको मतलब आपके लिए चॉइस में रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हम किस किस चीज में देखेंगे जिसमें कि लड़की बच्चों में, खासकर लड़की बच्चों, लड़कों में भी होता है कि लड़की बच्चों में क्या क्या जीता है। सबसे पहला होता है कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस। 11 से 13 साल या 15 साल के बीच में आपको मासिक धर्म शुरू होता है। आपके जांग में, आपके जो हाथ के नीचे आर्मपिट में बाल आते हैं, आपके अंदर वॉइस चेंज होता है, आपके अंदर बिहेवियर चेंज होता है। सिर्फ लड़कों में भी होता है, उसका लिंग का परिवर्तन होता है। लड़कियों में ब्रेस्ट का परिवर्तन होता है। तो दिस इज समथिंग changing from a childhood to adulthood but not yet achieved adulthood, and this is called as horizon of or adulthood. We call it as adolescent period. सबसे खतरनाक पीरियड होता है, खासकर 16 साल से लेके 22 साल के बीच में जो लड़का लड़की है, इसमें सबसे ज्यादा गलत काम करने का सबसे ज्यादा असर होता है। इसी में सबसे ज्यादा एडिक्शंस का चांसेस होता है। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को देखते हुए सबसे पहला होता है कि सेक्स एजुकेशन। आपको जानना है कि आपके अंदर ये चेंजेस क्यों हो रहा है, इसका क्या विकार हो सकता है, क्या परिणाम हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है, उसको समझ के आपको आगे काम करना है, बस अपने आप को ढाल नहीं देना है उसमें। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है कि अर्ली मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अंडमान में प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ 4% लोग अंडमान में अर्ली मैरिज करते हैं, बाकी सब जो है एज में ही मैरिज किया जाता है। क्योंकि हमारे पास ये पॉक्सो इतना ज्यादा सख्त, हमारे पास एक रूल है जिसके अंदर कोई भी अगर पहले शादी कर लेता है तो उसका हस्बैंड को 7 ईयर्स का सजा हो जाता है। तो काफी कम हो चुका है, एक दुका केस को छोड़ के। चाइल्ड बियरिंग कब होना चाहिए आपको, ये कंपोनेंट है। खासकर 18 साल के बाद अगर शादी करते हो तो 2 साल के गैप रख के 20 साल में आपको चाइल्ड बियरिंग होना चाहिए। सेकेंड चाइल्ड 25 साल से पहले होना चाहिए। अगर लेट भी हो जाता है तो कोशिश करें हस्बैंड वाइफ 30 साल से पहले अपने दोनों बच्चे को जन्म देकर फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा ले, फैमिली कंप्लीट कर ले। कुछ लड़कियां जो अंडमान में आते हैं बस नौकरी में, जब इंटरव्यू में पूछते हैं 31 हो गया, शादी नहीं किया, क्यों, उनको नौकरी चाहिए, उसके बाद शादी करेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों के साथ गलत कर रहे हैं कि बच्चे छोटे रह जाएंगे, आप बड़े हो जाओगे, नौकरी मिले ना मिले अलग बात है। तो उससे क्या होगा कि आपका एज गैप बढ़ेगा, बच्चों में साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, आपको जो टेक केयर करना, वो एनर्जी जो चाहिए वो एनर्जी होगा नहीं है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज अबॉर्शन। कभी कभी क्या होता है, अनवांटेड बर्थ हो जाता, अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाता है, चाहे अनमैरिड लड़कियों में हो चाहे मैरिड में हो, या 2 बच्चों के बीच में गैप बहुत कम हो जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो जाता है, या रेप के द्वारा बच्चे होते हैं। तो उसका अबॉर्शन करने के लिए भी एक सर्विस हम देते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, उसका अबॉर्शन सर्विस बोलते हैं। इसमें मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग टॉपिक में निकल जाएंगे हमारा मेन टॉपिक से। उसके बाद लड़की लड़कों को बताना कि जो
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज HIV एड्स, इसके बारे में बताना, ये भी एक कंपोनेंट है हमारा। एनीमिया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम अंडमान में इज एनीमिया। आपको मालूम होगा 70 to 80% ऑफ फीमेल्स आर माइल्डली एनीमिक और सीवियरली एनीमिक। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अंडमान में मैं जिससे भी पूछता हूँ ब्लड कितना है, 11 ग्राम, बहुत अच्छा। उसकी सास बोलती है बहुत अच्छा, मेरे टाइम में 10 था, बच्चा इतना अच्छा पैदा हुआ, कभी नहीं। आप आज से ही कोशिश करो कि आप डॉक्टर से मिलके या किसी हेल्थ वर्कर से मिलके अपना ब्लड हीमोग्लोबिन बढ़ाइए अभी से। जो कॉलेज बच्चे हैं, जो 2 साल में 3 साल में शादी करने वाले हो आप लोग, आपका ब्लड 13 ग्राम और जो लड़के हैं उनका ब्लड कम से कम 14 ग्राम होना चाहिए, तभी जाके बच्चा लाने का सोचिए। तो क्या होगा कि बच्चा इंटेलिजेंट पैदा होगा, बीमार पैदा नहीं होगा, एक्टिव पैदा होगा। सेक्सुअल ओरिएंटेशन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन मतलब होता है कि आप क्या है वो आपको जानना जरूरी है। आपका नेचुरल हैबिट क्या है और आपका सामाजिक हैबिट क्या होना चाहिए, आपका सामाजिक दायरा कितना होना चाहिए, वो चीज आपको समझना जरूरी होता है। टीवी में, रेडियो में, यूट्यूब में बहुत कुछ दिख जाता है हमें। अगर गूगल सर्च करो तो बहुत सा गंदगी दिख रहा है, लेकिन हम उस सेक्सुअल ओरिएंटेशन के द्वारा जो हम गलत काम कर लेते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स, अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, नहीं तो मास्टरबेशन जैसा चीज, या फिर कुछ गंदे फिल्म देख के उसी में खो जाना। कुछ कपल्स में ऐसा पाया गया है कि उन लोग जब तक ये गंदे फिल्म नहीं देखते उनके अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं बढ़ता है। तो ये सब चीजें, ओरिएंटेशंस को आपको कहीं ना कहीं परे रखना है, दूर रखना है, नहीं तो आपका जिंदगी, सेक्सुअल जिंदगी बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेक्सुअल जिंदगी के लिए जब शादी हो जाती है तो आपके अंदर स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है, ऑफिस का स्ट्रेस, घर का स्ट्रेस, सास का स्ट्रेस, ससुर का स्ट्रेस, बच्चे का स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस के कारण सेक्सुअल डिजायर कहीं ना कहीं कम हो जाता है आप लोगों का, उसकी वजह से पार्टनर्स में एक तरह सा प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो ऐसे केसेस को सेक्सुअल ओरिएंटेशन द्वारा हम उनको काउंसलिंग करना, जिससे कि लोगों को लगे कि क्यों उनके अंदर दूरियां हो रहे हैं, तो जाके आप एक सेक्सुअल इश्यूज से बाहर आ सकते हो। ठीक है, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अगर आपके है तो उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो सकता है, उनको भी सेक्सुअल काउंसलिंग की जरूरत है कि क्यों आपके साथ दूरियां बढ़ रहा है। एब्यूज एंड वायलेंस हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे बड़ा चीज होती है। अंडमान में आप देखोगे कि शाम को, रात को 7 बजे 8 बजे दारू पी के हस्बैंड पीट दिया औरत को, कभी औरत पीट दिया हस्बैंड को, ये सब चीज भी केसेस हम सामने आया है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इज वन ऑफ द बिग इश्यूज वी आर फेसिंग इन द इंडियन सोसाइटी आल्सो। सो ये सारा जो एब्यूज, वायलेंस एंड डिसओरिएंटेशन टुवर्ड्स रिलेशंस एक बहुत एक कंपोनेंट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। अगर इसको रोका ना जाए तो परिवार टूट जाएगा, उससे बच्चे आपके उन पे असर पड़ेगा, आप पे असर पड़ेगा। नेक्स्ट वन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस देना, लड़कियों को कम देना। तो खैर अब तक इस चीज को अंडमान में हमारे पास कुछ आया नहीं। ठीक है ना, हम दूसरा जो आपको इसमें सीखेंगे जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज में, तो सबसे पहले आपको जानना है कि क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो। सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन के बारे में हर बच्चे को जानना, लड़का हो लड़की हो दोनों को जानना जरूरी है, खासकर लड़कियों को तो जानना जरूरी होता है। और सबसे बड़ी चीज होती है कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन। मेंस्ट्रुअल हाइजीन में मैं एंड ऑफ द लेक्चर फिर बताऊंगा आपको, लेकिन एक चीज आपको बताना चाहूंगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में सबसे बड़ा चीज होती है कि आपको जब मेंस्ट्रुएशन होता है, जो लड़की बच्चे है, आप जाके पैड्स खरीद के लाते हो। क्या आप जानते हो पैड्स किस चीज से बनी है? क्या वो इको फ्रेंडली है, यूजर्स फ्रेंडली है या नहीं है? क्या उससे क्या आपको बाद में गुप्त अंग का कैंसर हो सकता है? क्या आपके अंदर उससे बिना मतलब सेक्सुअल डिजायर बढ़ सकता है? क्या कोई केमिकल्स उसके अंदर है क्या? इसीलिए सबसे अच्छा चीज होती है कि मेंस्ट्रुएशन में सबसे पहले आपका जो भी पर्सनल बातें है, हमसे ज्यादा आप जानते हो, आप लोग बोलने की जरूरत नहीं है। एक चीज होता है, जब भी आप पैड्स यूज करते हो प्लीज अपना कॉटन पैड्स ही यूज करें, बाकी जितने भी टीवी एडवर्टाइजमेंट वाले हैं उन चीज को प्लीज बाहर फेंकिएगा। दूसरी वजह इश्यू होता है फर्टिलिटी। मैंने बोला कि इनफर्टिलिटी का केसेस बढ़ रहा है, इंपोर्टेंस का केसेस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अर्ली सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी हो रहा है लड़का लड़कियों में, आप टैबलेट्स ले रहे हो, कुछ गंदे मूवीज देख रहे हो, आप कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपका खान पान बराबर नहीं है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनफर्टिलिटी और इंपोर्टेंस बढ़ जा रहा है। उसकी वजह से आपको करना क्या है कि ये सब चीजों से परे रखना है, एक्सरसाइजेस आपको बराबर करना है, योगा मेडिटेशन आपको रखना है, स्ट्रेस लेवल को कम रखना है। खान पीन में एक चीज बता दूं, कोई भी खान पान, जितना भी लोग बोले प्रोटीन एक्स पाउडर और ये वो, नथिंग इज गुड अदर देन योर देसी खाना। एक पहला चीज होता है। दूसरा जो खाने में आपको याद रखिएगा, खाने जब भी खाओगे, जब भूख लगे तभी खाना है, ये चीज को आप आराम से कोशिश कीजिए। अभी होगा नहीं क्योंकि आपको 3 टाइम और 4 टाइम खाने का आदत पड़ जाए, मच्छी भात और इन सब चीजें, तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जब भूख लगे तभी आप खाए, थोड़ा थोड़ा खाए। सर्वाइकल स्क्रीनिंग, एक शादीशुदा वुमन जो 30 साल से क्रॉस हो गया, उसके अंदर सर्वाइकल डिस्प्लेसिया, उसका सर्वाइकल जो मसल्स होता है, प्राइवेट पार्ट्स में जो मसल्स होता है, जो सेल्स होते हैं, उसमें कोशिकाएं होते हैं, उसमें बदलाव आती है, कभी कभी ये बदलाव जाकर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। इस चीज
को आपको स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो बाद में जाके आपको इनफर्टिलिटी, इन्फेक्शंस, ड्राइनेस, सेक्सुअल डिस्प्लेजर, पेन ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कैंसर। ये सब चीज को आपको देखना है। नेक्स्ट होता है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन हमारे पास अवेलेबल है लेकिन वाइडली अवेलेबल नहीं है, वाइडली अवेलेबल नहीं है। अगर है भी तो बच्चे या फिर यंग या फिर जो भी है आदमी औरत जाके कॉन्ट्रासेप्शन में डायरेक्टली बात नहीं करते हम लोग, ना ही दुकान में जाके डायरेक्टली मुझे कॉन्डोम दो, मुझे टैबलेट्स दो, नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि हमारा समाज अभी तक उतना बंदे वाला, अभी तो उतना कंजर्वेटिव अभी भी है हमारे पास। लेकिन कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना हर लड़का लड़की को बहुत जरूरी है। आप यूज करो ना करो, जानना बहुत जरूरी है, आपका लाइफ के लिए होता है। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी इश्यूज एक ऐसा इश्यूज होता है कि आप कब प्रेगनेंसी लाना है, कैसे लाना है, कितना गैप लाना है, कौन से एज में जाके हमको खत्म करना है, ये सारा चीजें आपको प्रेगनेंसी इश्यूज के बारे में हम बात कर सकते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज काफी बढ़ गया है पूरा दुनिया में, कहीं ना कहीं हिडन ट्रांसमिशन, हिडन डिजीजेस हो जाता है आजकल, तो पता नहीं चलता है, आपको सब नॉर्मल लगता है लेकिन आपके अंदर बीमारी है, अल्टीमेटली आपके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पार्टनर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फैमिली के लिए, बच्चे के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, सबके लिए। तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज को रोकने सबसे अच्छा चीज होता है यूज ऑफ कॉन्डोम। कॉन्डोम के अलावा कोई सेक्स नहीं है पहले बिफोर मैरिज, है भी तो बिना कॉन्डोम का नहीं है, कितने भी आप एक दूसरे पर भरोसा करते हो कि ना हो, ठीक है। नेक्स्ट होता है जो यंग लड़की में पाया जाता है, ओवरी में कुछ इश्यूज है, ओवरी में कभी किसी को बोलता है कि सर ट्यूमर हो गया, ओवरी में कभी सिस्ट हो गया, कभी एंडोमेट्रियोसिस हो गया, और ये चीज हम इनिशियल ध्यान नहीं देते। एक 15 साल 16 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो जाता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, बाद में इतना क्रोनिक हो जाता है कि वो चीज ठीक करना मुश्किल हो जाता है, बच्चे प्रेगनेंसी नहीं आता है, आपको बाद में सेक्सुअल डिस्प्लेजर हो जाता है, फैमिली पार्टनर में टेंशन हो जाता है, ये सारी चीज होती है। और नेक्स्ट जो लास्ट इश्यूज हमारे पास हेल्थ का, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का है, वो है आपका मेनोपॉज, जब आपका मासिक धर्म थम जाता है, रुक जाता है, वो सबसे खतरनाक टाइम हुआ रहता है, क्योंकि लेडीज में आपको डिप्रेशन हो जाता है, बार बार आपका मासिक धर्म आना होता है, सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाता है लेकिन प्लेजर नहीं मिलता है आपको, उस समय में आपको एनीमिया का प्रॉब्लम हो सकता है, हड्डियां नरम हो सकता है आपका। तो इस जो 45 इयर्स के आसपास की एज है, इसमें आप रिपीटेडली 6 महीने में, 3 महीने के डॉक्टर से मिलकर अपना ट्रीटमेंट या फिर कोई प्रिवेंटिव मेजर्स लेते रहिए कि आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, ठीक है। नाउ these are something already discussed earlier, ठीक है। नाउ ये सर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है? ये फॉरवर्ड सबसे हमने कुछ ग्रुप्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले कौन से ग्रुप को? सबसे पहला जो ग्रुप होता है हमारा, जब सेक्सुअल हेल्थ के बारे में बात करेंगे हम लोग, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, एडोलसेंट्स। मैंने बोला एडोलसेंट इज द होराइजन ऑफ एडल्टहुड, इट्स नॉट एडल्टहुड, इट्स नॉट चाइल्डहुड, इज अ होराइजन, ठीक है। तो होता क्या है कि इस एडोलसेंट पीरियड में हम बहुत सारा गलती कर देते हैं, हम एक फैंटेसी में रहते हैं कि जिंदगी ऐसा होता है, जिंदगी वैसा होता है, ये होने से ऐसा हो जाएगा, ठीक है, उससे शादी करने से ही मेरे को मुक्ति मिल जाएगा, शादी करने से जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये जो आपकी सोच है एडोलसेंट में, ये सोच आपका सोच नहीं है, आपका हार्मोन का सोच है। सबसे ज्यादा आपके लिए पार्टनर चुनना है तो आपके माँ बाप, आपके जो गार्जियंस है, दे आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड योर नीड्स एंड योर liabilities so that they can choose a better partner for you, ठीक है। दूसरा होता है सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाना, उसमें गलतियां कर बैठते हैं हम लोग कभी कभी। ये गलतियां जो है आपके लिए इनिशियल तो अच्छा लगेगा, तो कुछ साल के बाद, 30 साल हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा, उसके बाद आपको सब खटकने लगेगा, कहाँ फंस गया यार, ये प्रॉब्लम आपके साथ होगा। अभी कुछ साल के लिए आपको अगर आप संभल जाते हो तो प्रॉब्लम नहीं है। लड़का लड़का दोस्ती का मतलब होता है हेल्दी रिलेशंस, मस्ती मजाक, पार्टी पिकनिक, सब ठीक है, नॉट सेक्सुअल टच, नो बैड टच। तो एडोलसेंट पीरियड्स में आपको सबसे पहला चीज होती है सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा भाई, 16 साल से लेके 22 साल के जो बच्चे हैं, प्लीज संभल जाए। आप नहीं संभलोगे तो फ्यूचर आपका अंधेरे में जा सकता है। नेक्स्ट इज माइग्रेंट वुमेन, जो काम के लिए बाहर जाते हैं, आईटी के वुमेन, लेबर्स जो जाते हैं, उनके लिए उनका बहुत बड़ा एक सेक्सुअल इश्यूज रहता है, उनको बहुत बड़ा इश्यूज रहता है। इधर उसका सेक्स पार्टनर चेंज होता है या फिर सेक्स पार्टनर मिलते नहीं है उनको, क्लियर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर से डिजीज होने का चांसेस हो जाता है। कभी कभी इन लोग गलत काम में अपने आप को ढाल लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारा सोशल स्टिग्मा, बीमारी फैल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंडिजिनस पीपल्स। अंडमान में ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ कि जरवारों के इंडिजिनस पीपल्स है, माइनॉरिटीज है, इनको कोई इश्यूज नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है कि जहाँ पे आप लोग फॉरेन से कुछ जैसे रेफ्यूजी आ गए
उनके अंदर एक इश्यूज हो जाती है कि रेफ्यूजी आ गया, गरीब लोग है, तो 14 साल के बच्चे को शादी करा दिया जल्दी जल्दी निकालने के लिए, जिससे कि उसका फैमिली साइज घटा सके बाप अपना। तो इस तरीके से सब इश्यूज होता है। तो मैं इसमें इस ग्रुप पर डिस्कशन होगा नहीं। ओल्डर पर्सन्स जो 30 या 35 साल से ऊपर फर्स्ट टाइम जो लेडी प्रेगनेंसी ला रही है या शादी करके कर रही है और उसका प्रेगनेंसी डिसाइड कर रही है, उसको हम लोग बोलते हैं एल्डरली प्राइमरी ग्रेविडा। और इनको सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है, चाहे बच्चा मरा पैदा होगा, जल्दी पैदा होगा, बच्चा पैदा नहीं होगा, ये सारा जो होगा प्रॉब्लम होगा इनको होगा, और इनको लेके बहुत ज्यादा हमको परेशानी होती है। अर्ली मैरिज 20 साल के आसपास पहला बच्चा हो जाता है आपका, तो इट्स वेरी गुड थिंग फॉर यू, योर फैमिली, योर चाइल्ड। पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, जो मेंटल इलनेस है, जिसको लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, इनके साथ जो सेक्सुअल हेल्थ इश्यूज होती है वो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल डिसरप्टिव कारण हो जाता है। बच्चे का भी जो पागल लोग होते हैं, जो हैंडीकैप्स होते हैं, बीच में भड़क जाते हैं। एक एडल्ट आदमी, ही नीड्स, ही वांट्स सेक्सुअल डिजायर बट ही डजंट नो व्हाट टू डू, he doesn't know what's happening with him, so उन लोग भड़क जाते हैं। उनको काउंसलिंग करना, उनको बराबर एक तरह का शांत करना, इस तरह चीजें आपका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक है। देन वुमेन एंड एडोलेसेंट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट जोन्स लाइक रिफ्यूजीज, जो रिफ्यूजीज आता है हमारे पास स्पेशल ग्रुप में, ये सारे लोगों का जो इश्यूज होता है। और नेक्स्ट होता है कि हॉस्टल्स में वुमेन का, हॉस्टल्स में मेल्स का अलग लाइफ होता है। आपकी लाइफ एक केयर फ्री लाइफ होती है, एक लाइफ जिसको बोलते हैं राम भरोसे हिंदू होटल, माँ बाप ने पैसे भेज दिए, आपने खर्चे किए, आपने पढ़ाई की है, नहीं, क्या अलग बात है। और यहीं पे सबसे ज्यादा गलत काम इंस्टीट्यूशन सेटिंग में होने का चांसेस होता है, क्योंकि वहाँ पे गार्जियन का मिनिमम इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे सेटिंग्स को आपको संभल के रहना है, खासकर जो बच्चे हॉस्टल में होते हैं। नाउ इफ यू सी अंडमान निकोबार के जो डाटा देखोगे, तो इसमें सबसे पहले कि अंडमान में 86% महिलाएं जो है लिटरेट है, जिसको पढ़ना लिखना आता है। और अर्ली मैरिज, पहले मैं 4% बताया, इट इज 16.4%। लेकिन अंडमान में एक नेगेटिव इश्यू है कि 16.4% लोग अभी भी 18 साल से पहले शादी कर रहे हैं, लड़कियां खासकर। लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट अंडमान में बहुत अच्छा है, 1.3। इसका अर्थ ये होता है कि एक लेडी, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते इसको, लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल में आ गया ये चीज। एक लेडी एक बच्चे को जब एक लेडी दूसरा लेडी को रिप्लेस करे, मतलब एक लेडी अपने लड़की बच्चे को जब पैदा करेगी, तो उसका कैलकुलेशन को हम बोलेंगे कितना टाइम होगा अंडमान में कि एक लेडी 1.3 लड़की को जन्म देगी, तो जाके समाज में ये जो सेक्स रेशियो होता है मेल फीमेल का, ये बराबर रहेगा। इसको बोलते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अंडमान में 1.3 है, 2.1 होना चाहिए था एक्चुअली। ठीक है। चाइल्डहुड प्रेगनेंसी हमारे पास 3% बच्चे लोग हैं जो 18 साल से पहले प्रेग्नेंट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉन्ट्रासेप्शन, ओनली 65% लोग, शादीशुदा लोग जो भी है जिसको सेक्सुअल इसमें इन्वॉल्व है, ये लोग ओनली 65% लोग कॉन्ट्रासेप्शन यूज करते हैं, जो काफी कम है। इससे अनवांटेड प्रेगनेंसी चांसेस का चांसेस होता है। नेक्स्ट होता है अनमेट नीड ऑफ फैमिली प्लानिंग। उनको चाहिए प्रेगनेंसी फैमिली प्लानिंग करना, लेकिन उनके पास नहीं है, मेथड नहीं है, कॉन्डोम नहीं है, उनके फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी नहीं बैठा पा रहे। 13.5% लोग हमारे पास है जिनको ये अभी तक फैमिली प्लानिंग का मेथड बराबर अपनाना नहीं आता है, या नहीं होता है, या मिलता नहीं है। और 6.1% लोग ऐसे हैं अंडमान में जो स्पेसिंग के लिए अभी तक स्पेसिंग, 2 बच्चे का 3 साल का जो गैप रखने का जो स्पेसिंग है, उसको रखने के लिए आपका 6.1% लोग अभी तक कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, 1 साल के बाद अगर प्रेग्नेंट हो गया वो, तो उसमें क्या 2 बच्चे का एकदम गैप बहुत कम हो जाएगा, तो दोनों का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कम प्रॉब्लम होगा। तो कब एक बच्चा दूसरा बच्चा पैदा करना चाहिए, पहला बच्चा होना चाहिए, उसका 3 साल के बाद दूसरा बच्चा दुनिया में आना चाहिए। मतलब कि आप एक बच्चा पैदा कर लिया, अगले 2 साल बच्चा होने के बाद ही आप सेकंड बच्चे के लिए ट्राई कीजिए। नो क्वेश्चन ऑफ थर्ड चाइल्ड। ठीक है। नाउ सबसे बड़ा चीज हमको करना है क्या है कि ये चीज मैं इसको थोड़ा सा आपके लेवल पे नहीं है, तो इस चीज को अवॉइड करना चाहता हूँ। दिस इज फॉर डॉक्टर्स स्लाइड। ठीक है। तो हम लोग अभी करना क्या है, सब चीज को हम तो बताइए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। अब सबसे पहला चीज हम करोगे क्या, सबसे पहले आपको एक लड़की जो है जो 15 to 45 ईयर्स के है या लड़के हैं, उनको सबसे पहले प्रिवेंटिव सेक्सुअल हेल्थ सर्विसेज को देखना चाहिए। व्हाट इज प्रिवेंटिव हेल्थ सेक्सुअल सर्विसेज? सबसे पहला चीज होता है कि आपका, हम नंबर 2 को लेंगे पहले, काउंसलिंग। आपको काउंसलिंग होना जरूरी होता है। काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप सबसे पहले एडोलसेंट पीरियड में आप क्या करने जा रहे हो, क्या आपको सेक्सुअल हेल्थ में आगे जाना है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में जाना है, या फिर
आपको पढ़ाई में आगे जाना है, स्पोर्ट्स में आगे जाना है, लाइफ को प्लान करना है कि मैं 20 साल में शादी करूंगा या करूंगी, 21 साल में शादी करूंगा करूंगी, 23 में पहला बच्चा होगा, 25 में दूसरा, 25 से 26 में दूसरा बच्चा होगा, उसके बाद मेरा ऑपरेशन मैं क्लियर हो जाऊंगा और मेरा घर फैमिली इतना दिन होगा, 50 साल में मेरा बच्चा कॉलेज पास है, उसका भी शादी हो जाएगी, वो सेटल हो जाएंगे। ये पहला होता है। दूसरा काउंसलिंग ये होता है कि मैं आज BA BSc BCom पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, मेरे को 3 साल के अंदर किसी जॉब में घुसना है। अगर मेरे को पुलिस में नहीं जाना है तो मैं क्लर्क बनूंगा, क्लर्क नहीं तो टीचर बनूंगी, टीचर बनूंगा नहीं तो फॉरेस्टर बनूंगा या फिर और कुछ बन जाऊंगा, साइंटिस्ट बन जाऊंगा, वट एवर लाइक वो टारगेट। और उस जॉब में अगले 10 साल में आप कहाँ रहोगे, ये पहला। दूसरा, तीसरा टारगेट होना चाहिए, मैं 25 साल उम्र में मेरे पास 50 लाख होना चाहिए, 30 साल उम्र में मैं 1 करोड़ कमाऊंगा, एक घर होना चाहिए, बीबी और बच्चा होना चाहिए। दैट्स योर प्लानिंग, दिस इज द प्लानिंग एंड दैट टू अचीव थ्रू काउंसलिंग। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है आपका वैक्सीन। आपने हेपेटाइटिस बी का नाम सुना होगा, हेपेटाइटिस बी जिसको सफेद जॉन्डिस बोला जाता है। सफेद जॉन्डिस HIV एड्स से भी खतरनाक होता है क्योंकि ये हर रूप से फैलता है। ये हर बच्चे को वैक्सीन लेना चाहिए, हर कॉलेज के बच्चे को वैक्सीन लेना चाहिए, छोटे बच्चों को वैक्सीन लेना। नॉर्मल में छोटे बच्चों को देते ही देते हैं, लाइफ में 3 वैक्सीन एक साथ दे देते हैं, उसके बाद हम देते नहीं है। बड़े जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लिए नहीं है, प्लीज अपना वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि एक बार हो गया तो लिवर कैंसर, लिवर का सिरोसिस सब हो जाएगा। दूसरा होता है कैंसर वैक्सीन, उसको बोलते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वैक्सीन, जो कि लड़की बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चे ले ले, नहीं तो 15 साल से पहले बच्चे ले ले, इवन 13 साल में ले सब बच्चे, तो सब लड़की बच्चा सबसे अच्छा होता है। उसमें जो प्राइवेट पार्ट का कैंसर होता है वो कैंसर से ये प्रिवेंट करेगा आपको। ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग में बता रहा था, और एक लास्ट लाइन आप देखिएगा, काउंसलिंग में बता रहा था कि इट में बी ऑन थिंग्स ऑन काउंसलिंग में बी ऑन कॉन्ट्रासेप्शन एंड STI प्रिवेंशन। मैंने बोला कि बच्चों को आपको सेक्सुअल एजुकेशन देना जरूरी होता है, कि आपके साथ अगर संभोग होता है किसी से, तो किस दौरान संभोग करने के बाद आपको बच्चा होने का चांस रहता है, कब बच्चा होने का चांसेस नहीं रहता है, उसको होता है सेफ पीरियड। ये आपको जानना जरूरी है, अडॉप्ट करना नहीं है, फिर बोलता अडॉप्ट नहीं करना, कि जानना जरूरी है। अगर सब कुछ गड़बड़ हो भी जाता है, कंट्रोल नहीं रहा, तो क्या आप कॉन्डोम यूज करोगे, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करोगे, कॉपर टी यूज करोगे, या और कुछ यूज करोगे? इसके बाद आपके जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसका लक्षण क्या है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सके, कि एक बार सेक्सुअल ट्रांसमिटेड हो गया आपको, HIV एड्स को छोड़ के बाकी शायद ठीक भी हो जाए, लेकिन उसका एक स्कार जो जिंदगी भर रह जाएगा, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देगा आगे पीछे जाके। नेक्स्ट इज रिवाइज योर डाइट एंड हैबिट्स। वे फॉरवर्ड में बता रहा हूं मैं, आपका डाइट्स एंड हैबिट्स को करना चाहिए। सबसे पहला चीज होता है, एक होता है फूड फैडिज्म, और एक होता है आपका क्या बोलते, आई एम नॉट गेटिंग अ टर्म, आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द टर्म, जिसको फूड मतलब बहुत ज्यादा खाने का दिल नहीं है, कम खाते हैं। एक होता है फूड ज्यादा चूज करते हैं, बहुत ज्यादा चूज करते हैं, ठीक है, और अपने चॉइस का मिला तो बहुत ज्यादा खा लेंगे, दूसरे एकदम नहीं खाएंगे। ये सारा दोनों एक्सट्रीम्स आपके लिए बहुत खतरनाक है। एक फीमेल जो कॉलेज जाता है, एक बच्चा जो है आपका 18 साल का, उसको 1875 किलो कैलोरीज का आपको चाहिए, 50 ग्राम का प्रोटीन चाहिए, बाकी का आपको फैट चाहिए। ये आपको कंप्लीट फूड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। उसमें से कुछ लोग जो है वेजिटेरियन खाते हैं, खासकर जो बोलते हैं मैं आई एम ब्राह्मीण और मेरे घर में सिर्फ वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, हम सिर्फ घास फूस ही खाते हैं, व्हाट इज सॉरी बट साग सब्जी खाते हैं। तो उनको मैं कह दूं, जो लोग सिर्फ वेजिटेरियन खाते, उनके अंदर एनीमिया चांसेस ज्यादा है। मेरे खुद के एक रिसर्च मैंने किया था पुणे में, तो मुझे याद है, तो मुझे पाया गया था ऐसे लोग जो वेजिटेरियन खाते हैं उनमें ब्लड का मात्रा कम होता है। तो गाइस प्लीज, जो प्योरली वेजिटेरियन है, बात ध्यान से सुनिएगा, आप अपने वेजिटेरियन डाइट में खट्टा जरूर ऐड कर ले, खट्टा जरूर ऐड कर ले, कोई भी खटाई चलेगा आपका, चाहे कोकम ही क्यों ना यूज करो, खट्टा आपको जरूर ऐड करना चाहिए, जिससे कि आपको सब्जी में जो आयरन है वो मात्रा में आपके अंदर अब्जॉर्ब हो सके। नहीं तो क्या होता है, सब्जी में कुछ ऐसा एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर होता है जो इस सब चीजों को एब्जॉर्ब होने देता नहीं है, तो उसको विटामिन सी काटता है। ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट होता है कि आपको मैंने बैलेंस डाइट बोला, बैलेंस डाइट फुल स्क्वायर मील बोलते हैं, तीनों प्रोटीन विटामिन मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट इक्वल एक प्रोपोर्शन में होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, 2 डिकेड हुआ है जो ओमेगा को लेके बहुत ज्यादा जद्दोजहद चल रहा है। ओमेगा जो है आपका फिश में सबसे अच्छा मिलता है, वो फिश ऑयल में सबसे अच्छा मिलता है, जो हार्ट के लिए अच्छा होता है, आपके बॉडी के लिए अच्छा होता है, आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए भी अच्छा होता है ओमेगा 3। ठीक है,
क्योंकि ये प्रोटेक्टिव काम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ओमेगा 3 वाली फूड जितने भी फिश खासकर आपका होता है उसमें आपको मिलता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, ये चीज आपको लेना चाहिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का मतलब होता है जो खाने के बाद अचानक शरीर में शुगर को ना बढ़ा दे। ठीक है, जैसे कि अंडमान में 13% लोग अभी शुगर से ग्रसित है, करीब 25 से 30% लोग हाइपरटेंशन से ग्रसित है। तो आपको भी हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि हम सब सेडेंटरी हो चुके हैं, वो जो छोटा पहले जैसे भागदौड़ का लाइफ नहीं है, बैठना, गेम देखना, टीवी देखना, मूवी देखना, वही सब चल रहा है हम लोग का। तो उसकी वजह से लो ग्लिसमिक फूड बोलने से जिसका शुगर मात्रा कम हो, या फिर जो खाने के बाद सडनली बदन में शुगर न बढ़ा दे, जैसे कोई भी चीनी, जैसे कि आपका सॉइल के नीचे उगने वाला कोई भी चीज, घुइयां से लेके आलू से लेके सब चीज को आपको बंद करना है, सिर्फ प्याज को छोड़ के। प्याज को भी आप कम कर सकते हो चाहे तो, ठीक है, वो चीज आपको कम करना है। जैसे फ्रूट्स में आप बहुत सारा कम कर सकते हैं। अब तक रिसर्च बताता था कि तरबूज खा लो, शुगर है तो तरबूज खा लो, जबकि पाया गया शुगर में तरबूज में सबसे ज्यादा शुगर होता है। तरबूज में सबसे ज्यादा शुगर बढ़ता है, हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स वाला फूड है। कभी तरबूज डायबिटिक पेशेंट को नहीं देना है। चीकू, सीताफल, पका हुआ आम, केला, ये सब चीजें शुगर पेशेंट को लेना नहीं चाहिए। आपको भी लेना चाहिए लेकिन सीमित दायरे में। सिट्रस ज्यादा लीजिए, खटाई ज्यादा लीजिए, खट्टे फल ज्यादा लीजिए आप, ठीक है। ये जुजुबे जिसको बोलते हैं, जिसको ये बेर बोलते हैं, बड़ा बड़ा होता है जो मीठा बेर मेलैंड से आते हैं, उस बेर को आप यूज कर सकते हैं, उससे आपका ग्लिसेमिया बढ़ेगा नहीं। खरबूजा यूज कर सकते हो आप, जितना सिट्रस फ्रूट, एप्पल यूज कर सकते हो, लेकिन कोशिश कीजिए अमरूद वगैरह, कोशिश कीजिए जो आप फूड खा रहे हो वो फूड आपके लोकल मार्केट में लोकल उगता हो। एक्सोटिक फूड नहीं है। एप्पल अंगूर हमारा फूड नहीं है, वो हमारे उगता नहीं है, तो हमारे पास का फूड नहीं है, उस चीज को आप कम कीजिएगा। नेक्स्ट इज लो कार्बोहाइड्रेट फूड। लो कार्बोहाइड्रेट में राइस, ये आपको ध्यान देना है, राइस आपको कम करना है। अगर राइस कम करते हैं तो सब्जी उस प्रोपोर्शन से बढ़ा दीजिए आप, क्या देखिएगा। खासकर जो लोग डायबिटिक्स है वो रोटी बिल्कुल नहीं खाना, कोई भी रोटी का प्रोडक्ट, आटे का प्रोडक्ट बिल्कुल आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल मिनिमम कर दीजिएगा। जो पुराने डॉक्टर्स बोलते होंगे कि शुगर है इनको, तो ठीक है रोटी खा लो एक बार, रोटी से आपको लॉन्ग टर्म में शुगर बढ़ेगा। उससे अच्छा ब्राउन राइस ले लीजिए थोड़ा सा, और जितना आप राइस लोगे उसका डबल क्वांटिटी सब्जी ले लीजिए, तो क्या आपको कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, पेट भी भरेगा आपको, और हाई ग्लिसेमिक इंडेक्स नहीं होगा। कोशिश कीजिए वेजिटेबल प्रोटीन लेने के लिए। लेटेस्ट जो ब्रोकोली होता है, ब्रोकोली में लेटेस्ट सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, आपका दाल में 30% प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। टोफू जो होता है एनिमल, इसमें आपका दैट्स ए एनिमल प्रोडक्ट ऑलमोस्ट। तो इनको जो होता है ये सारी चीजों में आपका हाई प्रोटीन मिलता है, प्रोटीन सबको यूज कीजिएगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग मटन, एग्स। एग्स इज ए कंप्लीट फूड, ओनली प्रॉब्लम इज इट कंटेन्स लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सॉरी कोलेस्ट्रॉल। तो ये चीज देखिए, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो आपको बीमारी होगा तो इन्फर्टिलिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट कम्स इज एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फाइटोकेमिकल्स। हर ग्रीन वेजिटेबल्स में एंटीऑक्सीडेंट्स मिलता है, जो बदन के फ्री रेडिकल, जिसको बूढ़ा करता है, शरीर को बूढ़ा कर देता है, कमजोर कर देता है, उस चीज को साफ कर देता है वो फ्री रेडिकल्स का, एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स पाने के लिए डॉक्टर्स लोग बोलते हैं या मीडिया बोलता है कि लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, लॉट ऑफ फ्रूट्स आप खाइए। यस, वेरी गुड, बट मैं बता दूं एंटीऑक्सीडेंट के साथ एक चीज आपकी होती है, वो चीज होती है आपका फाइटोकेमिकल्स। फाइटोकेमिकल्स हर ग्रीन, हर येलो चीज में मिल जाएगी आपको, लेकिन याद रखिएगा उस फूड को आप 2 घंटे के अंदर खाना है तोड़ने के बाद, ना कि सब्जी मार्केट में 10 दिन पुराना फ्रिज में रखा वाला सब्जी जो बेचा जाए फ्रेश दिख रहा है वो नहीं। आपको पेड़ से तोड़ के इमीडिएटली पका दिया, 2 घंटे के अंदर अपने घर में खा लिया, उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और सबसे ज्यादा आपको फ्री रेडिकल्स मिलेंगे। जो लोग बॉडी बिल्ड करते हैं, खासकर लड़के, प्लीज अवॉइड कीटो डाइट्स, 100% अवॉइड कीटो डाइट्स। प्लीज अवॉइड प्रोटीन पाउडर जो आपको बॉडी बिल्डिंग में दिया जाता है, इसको 100% बंद कीजिए, नहीं तो आप फ्यूचर आपके लिए अंधेरा हो जाएगा। जैसे जैसे बूढ़ा होते जाएंगे आपका जॉइंट पेन होता रहेगा, आपका इम्यूनिटी डाउन होता रहेगा, ठीक है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग कैन अफेक्ट योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आपका जो अल्कोहल होगा, स्मोकिंग होगा, और अल्कोहल से ज्यादा स्मोकिंग सबसे ज्यादा आपको हार्म करेगा। बच्चे कमजोर पैदा होंगे, बच्चे अबॉर्शन हो जाएगा, स्टिल बर्थ डेथ पैदा होगा, बच्चे होगा नहीं। तो बिल्कुल स्मोकिंग ना करें। खासकर जो लोग प्रेगनेंसी लाना चाहते हो, 1 महीना पहले अगर स्मोकिंग अल्कोहल करते भी है तो 1 महीना पहले हस्बैंड वाइफ दोनों अल्कोहल और स्मोकिंग क्विट करें, ठीक है। जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल और स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर कैंसर, इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, तो आप देखिएगा इस चीज को।
नेक्स्ट इज आपका वे फॉरवर्ड इज एंगेज इन सेक्स सेफ, लिमिटेड पार्टनर्स, एक पार्टनर, नो सेक्स बिफोर मैरिज, ये प्रिंसिपल अपनाइए। ठीक है, आपको शादी से पहले लड़के बोलना चाहिए जय श्री राम, शादी के बाद जय वीर हनुमान, और शादी के बाद जय श्री राम। इसका जो मुहावरा का कारण आपको समझ में आ गया कि शादी से पहले जय वीर हनुमान और जय बजरंग बली, और शादी के बाद जय श्री राम। इसका मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये मंत्र मान के चलो जिंदगी में, तो आपको काफी हद तक आपको जिंदगी में कंट्रोल करने में, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। ठीक है, मैंने फिर बोला लड़कियों से दोस्ती करना, लड़कों से दोस्ती करना खराब नहीं है, पिकनिक मनाना, पार्टी मनाना खराब नहीं है, बट डोंट इन्वॉल्व इन सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ठीक है, नाउ जितना ज्यादा पार्टनर बनाओगे उतना ज्यादा आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होगा, आपका प्राइवेट पार्ट का कैंसर बढ़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जितना एज बढ़ता रहेगा सेक्स के प्रति आपका डिससैटिस्फैक्शन बढ़ते रहेगा, आपका चाह बढ़ती रहेगी लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं होगा आपको। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज अगर आपसे नहीं होता है, बाई चांस ऐसा लगता है कि आपसे गड़बड़ गलती हो भी रहा है, तो प्रोटेक्शन यूज करें, खासकर कॉन्डोम्स, चाहे फीमेल कॉन्डोम्स हो चाहे मेल कॉन्डोम्स हो, ये चीज को आपको यूज करना है। अगर आपको मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो बीच बीच में अपना सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज का टेस्ट भी आप करा सकते हो। एक्सरसाइज विथ मॉडरेशन, एक्सरसाइज विथ मॉडरेशन, मैं ये नहीं बोलता कि आप बॉडी बिल्ड करो। लड़के जो जिम में जाता है, 15 साल के नीचे कोई लड़का लड़की जिम नहीं करेगा, 15 साल के ऊपर आप कर सकते हो। अगर जिम आप लगा लिए एक बार तो याद रखिएगा जिम को लाइफ लॉन्ग मत छोड़िए। जहां छोड़ दिए आप ऐसे फूलोगे कि आपको सारा जॉइंट पेन से लेके हाइपरटेंशन से लेके हार्ट अटैक से लेके सब कुछ शुरू हो जाएगा आपको। तो इसीलिए एक्सरसाइज सबसे अच्छा होता है योगा, एरोबिक्स, वॉकिंग, रनिंग। जहाँ जिम का आपने रास्ता रुक कर दिया तो जिंदगी भर चीज को मान के चलो, नहीं तो फ्यूचर जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले होती है लेडीज में, जेंट्स में, जहां पे आपने वेट बढ़ाया या घटाया तो आपके अंदर हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं आपको मात देगा। और हार्मोन प्रोडक्शन मातने से क्या होता है, आपके अंदर इनफर्टिलिटी होगा, स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे, ऐसा ऑल दिस चीज हो सकता है। इसके बाद अगर बच्चे अंदर आ भी गया तो बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा, प्रीमैच्योर या डेथ पैदा होगा, अंडरवेट पैदा होगा, ये सब चीज प्रॉब्लम हो जाएगा। ओवरवेट से क्या होगा कि स्ट्रेस, जो मोटे होते हैं उनके अंदर बहुत जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, कुछ बहुत झट से वो डर जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो ये जो ओवर स्ट्रेस वाली चीज होती है, ये चीज आपका स्ट्रेस वाली चीज होता है वेट के साथ बढ़ता है। जो पतले लोग होते हैं वो सिचुएशन को जल्दी टैकल कर सकते हैं। पतला बोलने से एकदम थिन बिल्ट एकदम नहीं है, जीरो फिगर नहीं है, इट इज मॉडरेट फिगर, जो BMI 18 से लेके 25 तक आपका है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, अगर कंटिन्यूस आपके अंदर स्ट्रेस है तो होगा क्या है कि आपका इम्यून सिस्टम एकदम डाउन हो जाएगा, कोई भी बीमारी बहुत जल्दी आपको पकड़ लेगा। स्ट्रेस की वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लेडीज है उसमें आपका गड़बड़ हो जाएगा, आगे पीछे होता रहेगा। ठीक है, और इससे क्या होगा कि बच्चा पैदा होने में आपको बहुत तकलीफ होगा ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सरसाइज आपको करना है मॉडरेशन के साथ, आपको वेट को बैलेंस करना है, वेट को कम नहीं करना है। जो बैलेंस दिया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, साइंस ने, वो चीज को आपको फॉलो करना है। एक्सरसाइज अगेन बोल रहा हूँ, अगर जिम कर रहे हो तो लाइफ लॉन्ग उसको साथी बना लो, अदरवाइज योगा, मैट एक्सरसाइज, आपका जो भी रनिंग, जॉगिंग, प्लेइंग जो करते हो लाइफ में वो चीज आप करते रहेगा, वो सबसे बड़ा चीज रहेगा आपके लिए। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, तो अगर सबसे बड़ी बात बोलूं कि गुड हाइजीन, रेगुलर क्लीनिंग और वेजाइना, योर प्राइवेट पार्ट, सबसे बड़ा चीज होती है कि सबसे पहले हम बोलते हैं कि आप जब भी आप यूरिन में जाते हो, यूरिनल जाते हो, अपना प्राइवेट पार्ट को अच्छा से पानी से फ्लश करके धोइए। खासकर आप बाहर यूरिनल में गए थे पब्लिक टॉयलेट में, तो घर आने के बाद एक आपका जो सेल्फ क्लीन होता है या PB क्लीनिंग एक लिक्विड मिल जाता है क्लोट्रामेजल वाला, वो क्लीनिंग का एक लिक्विड ले लीजिए, उससे हाथ में लगा के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से धो लीजिएगा। क्योंकि जब आप कहीं पे भी पेशाब करते हो या यूरिन करते हो, कुछ करते हो, तो क्या होता है कि वो छिटक के आपके अंदर आ सकता है, तो उसके सरफेस में अगर उस टॉयलेट का सरफेस में कुछ बैक्टीरिया रहा तो आपको उल्टा इफेक्ट हो सकता है, उल्टा आके। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी आप साफ करते हो प्राइवेट पार्ट, जेंटली करना है, कोई भी जख्म आने नहीं देना वहां पे। ठीक है, एंड लास्ट थर्ड भी सेम चीज होता है। लास्ट वन इज वेयर कॉटन पैंटीज, कभी भी आप पैंटीज पहनते हो कॉटन पहनिएगा,
कभी भी आप इलास्टिक वाला को कोशिश कीजिए ना होने से भी उसके चारों तरफ से कॉटन का आपका कोटिंग हो, और जो आपके जो मंथली साइकिल के लिए आप जो पैड्स यूज करते हो उससे भी कॉटन पैड्स ही यूज करें। मैंने पहले बोल चुका हूँ कि कौन सा केमिकल से बनाते हैं, लोग कौन से धागा यूज करते हैं, नोबडी नोस ऑल दिस बिग कंपनीज जो एडवर्टाइजमेंट देते। सिंपल कॉटन पैड्स आप यूज करें जितना हो सके, वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ठीक है, तो एकदम शॉर्ट में 1-2 स्लाइड में खत्म करूंगा मैं। सबसे पहले आप अगर क्विट स्मोकिंग एंड अल्कोहल कुछ है तो उसको आप बंद कर दीजिएगा सबसे पहले जिंदगी में। मैंने फिर कहूंगा कि स्मोकिंग इज मोर हार्मफुल देन अल्कोहल। ठीक है, आपका जो रेगुलर स्क्रीनिंग है वो स्क्रीन आपको करना है, खासकर जो 30+ वुमेन उनके लिए करना है। जो यंग लड़कियां शादी करने जा रही है उनके लिए मैं चाहूंगा कि डॉक्टर से सलाह मशवरा करें। 3-4 चीजों में आप ध्यान देखिएगा। सबसे पहला कि आपका रिप्रोडक्टिव लाइफ कैसा होना चाहिए, डॉक्टर से बात करना है कि आप शादी आप करो, इतना दिन में शादी करो तो कब बच्चा होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए। गैप के लिए दोनों बच्चों को पहला 2 साल बच्चे ना हो उसके लिए हम क्या क्या मेथड अपना सकते हैं, 2 बच्चे के बीच में गैप ज्यादा करने के लिए क्या मेथड अपना सकते हैं, ये सारा चीज आपको देखना है। ब्लड कितना होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपने सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूइटी पहले हासिल कर ली शादी से पहले, तो इस दैट केस आप कोशिश करो कि आपका कोई भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोथ हस्बैंड वाइफ आपको अगर है तो आपको टेस्ट करा ले, कोई ऐसा कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी आप ट्रीटमेंट करके दोनों सेफ हो सकते हो। कुछ स्टेट्स में इंडिया में भी एंड अब्रॉड में भी प्री मैरिटल टेस्टिंग जरूरी होता है। ये सब टेस्टिंग करने के बाद HIV टेस्ट वगैरह करने के बाद ही आप शादी कर सकते हो। प्रैक्टिस सेफ सेक्स, इसका बहुत बड़ा, मैं डैश छोड़ दी, बहुत बड़ा इसका टॉपिक होता है। सेफ सेक्स, अगेन सेक्स विथ वन पार्टनर, सेक्स विथ दिस वन कॉशन, जिससे कि आप अर्ली प्रेगनेंसी ना हो, प्रेगनेंसी के बीच में दोनों के बीच में कम गैप ना हो, ये सारा चीज आपको सेम टाइम आपको डिजायर मिले। अब होता क्या है कि कुछ लोग, मैं बात करना चाहूंगा, सारे बच्चे कॉलेज के बच्चे अब 18 साल के ऊपर ही होंगे, और आई एम सॉरी बिकॉज बहुत ज्यादा एलाबोरेटली चीजें आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन ये टॉपिक ही ऐसा है कि सबसे पहला चीज होता है कि सेक्स में बहुत सारा आता है कि सर आफ्टर सम टाइम द सेक्सुअल डिजायर गोज ऑफ, डिजायर बढ़ जाता है, परफॉर्मेंस नहीं होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। इसका कई सारा कारण होता है। एक सबसे बड़ा कारण होता है कि सेक्स पोजीशंस। Instead of having multiple sex partners, please have different sex positions that will give more satisfactions to you rather than having multiple sex partners. ठीक है, have regular orgasms. सेक्स बस सेक्स करने के लिए, सेक्स के लिए ऑर्गेजम, दोनों को जब तक ऑर्गेजम ना हो, जिसको आप चरम सुख बोलते हैं, अगेन सॉरी यूजिंग दिस टर्म्स बट यू आर एडल्ट, यू शुड अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, कि वो चीज को आप ध्यान रखिए, एक दूसरे पार्टनर का जो ऑर्गेजम है वो चीज को आप ध्यान रखिएगा जिसकी दोनों को सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है, और जो लड़की बच्चा है खासकर 30+ का हो गया है आप, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों चीज आप ले लीजिएगा। खासकर जब शादी करने जा रहे हैं उन लोग अभी से ही फॉलिक एसिड का टैबलेट शुरू कर दे, 6 महीने का कैल्शियम और मैग्नीशियम का कोर्स कर ले। ठीक है, साथ में जैसे आप प्रेगनेंसी का डेट लोगे, उससे मतलब पीरियड मतलब प्लान करोगे, तभी आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए। अगर लगता है कि 13 से कम है और हस्बैंड का 14 से कम है, तो उनको कुछ टैबलेट्स का लेके एटलीस्ट उसके आसपास पहुंचिए, तब जाके हम लोग इस चीज को अच्छे स्वस्थ बच्चा पैदा हो सकता है इसमें। ठीक है, तो फाइनल गोल क्या होना चाहिए आपका? फाइनल गोल आपका क्या होना चाहिए? सबसे पहला फाइनल गोल ऑफ लाइफ ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ इज लाइफ, आपकी लाइफ। सबसे पहले आप लाइफ कैसे जियोगे वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हर किसी को डॉक्टर और इंजीनियर नसीब नहीं होता है, हर किसी को कोई डॉक्टर इंजीनियर IAS नहीं बन सकता है, करोड़पति बन नहीं सकता है। आपका लाइफ एंड लाइफ विद ऑल्टरनेटिव्स। अगर आप लाइफ में डॉक्टर नहीं बन सकते तो और क्या बन सकते हो? तो लाइफ विद ऑल्टरनेटिव चलिएगा। कुछ लोग यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनको लगता है कि हम लोग कॉलेज के बाद B.Ed करेंगे, B.Ed के बाद हम टीचर बन जाएंगे। अगर B.Ed नहीं मिली तो क्या करोगे आप? सेकंड नहीं तो थर्ड क्या होगा? तो ये लाइफ का गोल आप बना के चलिएगा सबसे पहले। उसके बाद 3-4 गोल बनाए, एक तो कैरियर गोल, सेक्सुअल लाइफ गोल, ठीक है, फाइनेंशियल गोल एंड सोशल लाइफ गोल, इस चीज को बना के। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। जिंदगी में जो भी करो, एक तो अपने जितने भी क्लोजेस्ट आदमी है उससे बता के आप काम करो, और दूसरी बात है, सबसे पहले चीज होता है कि जो भी आप प्लानिंग करोगे उसको बता के करो, तो क्या होगा, आपको सपोर्ट मिलेगा। और जिससे आप बात करें उसको आपका जो भी चीज है उसको कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी होगा। ठीक है, आपके अंदर
right to decide number of spacing of children, कि आपके बच्चे कब होना चाहिए, कितने दिन में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ठीक है, ये चीज होना चाहिए. नेक्स्ट इज हेल्थ. योर हेल्थ इज योर राइट, योर हेल्थ इज इन योर हैंड. हेल्थ सबसे बड़ी, हेल्थ ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आप घंटों हम बात कर सकते हैं, लेकिन हेल्थ ऐसा होता है कि आप कितने लाइफ को कैसे जियोगे, किस हेल्थ से जियोगे. आपको डायबिटीज पसंद है कि चश्मा पसंद है, कि आपको ब्लड प्रेशर पसंद है, कि तीनों पसंद नहीं है आपको, नहीं कि आप ऐसा कुछ करना चाहोगे कि जिससे कि जिंदगी में डॉक्टर्स का आपके पास आना जाना रहे, कभी नहीं होता है. नेक्स्ट इज ऑटोनॉमी इन डिसीजन मेकिंग. खासकर लड़कियों को हमें छोड़ना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, कि उसे क्या पसंद है और उसके पसंद के हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए. सिर्फ जिंदगी का डिसीजन नहीं, आपका सेक्सुअल लाइफ का डिसीजन भी आपके अंदर होना चाहिए, कि आपके अंदर आके डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर मुझे बच्चे का स्पेसिंग करना है, तो डॉक्टर नहीं बोलना चाहिए तुम कॉन्डोम यूज करो, तुम कॉपर्टी लगाओ. नो, आई कैन टेल यू एज ए डॉक्टर कि ये मेथड से तुमको कौन सा चाहिए, फिर आप चॉइस करो कि हाँ मुझे ये कैसा रहेगा, फिर हम बताएंगे ये आपके लिए सूटेबल है नहीं है, फिर हम बताएंगे, आप डिसाइड करो. तो ऑटोनॉमी इन डिसीजन इज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है. फ्रीडम फ्रॉम इनह्यूमन एंड डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट. खासकर ये चीज को हम अंडमान के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, खासकर जो कुछ कंजर्वेटिव समाज में इस चीज होती है कि लड़कियों को धमकी देके, मार के, पीट के, बंद करके बांध देते हैं, उनको शादी जहाँ करना करा देते हैं, उनको ही सुंदर जिंदगी भर, ये सब चीजें होती है जिससे कि लड़कियों का एस्टीम कम हो जाता है, उनको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाता है, उनको साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हो जाता है, ऑल दिस थिंग होता है. नेक्स्ट इज प्राइवेसी. लाइफ में कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ये दो चीज रखना बहुत जरूरी होता है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है. इसका अर्थ ये होता है, इसका बहुत ज्यादा बड़ा अर्थ होता है. अगर सेक्सुअल लाइफ में देखा जाए तो आपके पार्टनर्स के बीच में जो होता है, आपके पार्टनर्स और आपको ही मालूम होना चाहिए. आपको लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई गड़बड़ होता है, तो ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आप दोनों को समझता हो, आपको अच्छा आइडिया दे सकते हैं, ना कि आपको हरासमेंट कर सकते हैं, आपका गलत फायदा हो सकता है, ठीक है. और एक गोल होता है बेनिफिट फ्रॉम साइंटिफिक प्रोग्रेस. साइंटिफिक प्रोग्रेस का मतलब होता है कि आज दुनिया में सब कुछ अवेलेबल है, चाहे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से लेके आपका आर्टिफिशियल बेबीज तक हम बना सकते हैं. आपका ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो 10-10 साल आपके अंदर आप डाल के रखेंगे लेडीज में, तो 10-10 साल आपको काम करेगा, आपको 10-10 साल कुछ करने की जरूरत नहीं है. ये जो साइंटिफिक प्रोग्रेस होता है, उस चीज को हमको लाना जरूरी है समाज में, और लोगों को और बेनिफिट देना है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेली टैबलेट्स, डेली आप टैबलेट खाओगे, 2 साल में आपको कहीं ना कहीं तकलीफ होना शुरू हो जाएगा. उससे अच्छा अगर 10 साल में एक इंस्ट्रूमेंट आपके अंदर डाल दिया जाए, कॉपर्टी जैसे छोटा इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा, 10 साल तक आप फ्री हो जाते हो कोई भी प्रेगनेंसी से. 5 साल से मिनिमम उसको आप यूज कर सकते हो, जब चाहो निकाल के फिर दूसरा बच्चा ला सकते हो. ऑल दिस थिंग्स आते हैं. तो साइंटिफिक की जो नया प्रोग्रेस है, उस चीज को हम लोग रिप्रोडक्टिव लाइफ में यूज करना चाहिए. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन. इन्फॉर्मेशन में कैसा होता है कि आपको मालूम होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, क्या गलत है, क्या सही है, सेक्सुअल हेल्थ में क्या सही है, क्या गलत है. आपके अंदर इन्फॉर्मेशन रहेगा, यू विल बी गुड चूजर. इफ यू नॉट नो इन्फॉर्मेशन, यू विल बी लूजर. सो डोंट बी अ लूजर, ट्राई टू बी a चूजर. अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डोंट एग्जीक्यूट टिल इट्स रिक्वायर्ड. जहां तक नॉन डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की, हिंदू मुस्लिम्स, हाई कास्ट लो कास्ट का इश्यूज है रिगार्डिंग सेक्सुअल हेल्थ, वो चीज अंडमान में है नहीं, तो उसमें मैं बात नहीं करना चाहता हूँ. ये सारा चीज कुछ बच्चों में आपसे बात करना चाहता था. एक्चुअली ये बहुत हाईफाई टॉपिक हो गया. एक्चुअली आपको क्या समझाना मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ओपनली बात की आप लोगों से, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे मिले जो आप यूज करते हो जिंदगी में, इंस्टेड ऑफ जस्ट डायरेक्ट लेक्चर देके छोड़ दिया आपको. अगर किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिएगा. Students shall are free to ask whatever you want to sir. Sir is waiting for your response. Kindly cooperate. कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी क्लियरफाई. एनी डाउट अबाउट योर हेल्थ? सो पूनम मैडम, आई थिंक बच्चे को कोई डाउट नहीं है, या फिर हो सकता है कि इस माहौल में पूछना नहीं चाहेंगे. Maybe, sir, open I will questions. advise them So to thank you. put it in the chat box. And thank you so much, Screen, sir, yeah. for the enlightening speech. और बच्चों को इतने आराम से आपने Thank you very much. इतने sensitive topic पे समझाया. I hope they understood and they will look forward to have a very healthy and very positive life. Thank you so much, sir, for the session.
Thank you. Thank you very much. Thank you. All the best. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Bye. 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 I hope you all enjoyed the session. And now we will go for the last technical session. And that will be held by Shri Saurabh Dudi. He is Assistant Professor in Law, Andaman College, Port Blair. And he will be discussing with you all the reproductive health in special reference to Andaman Nicobar. So it's a request to all the students to please pay attention. And if you have any queries, feel free to ask, don't hesitate. Because this is a session, this is a platform where you can clear all your doubts. And I would love and that you'll interact with our respective speaker. And now I welcome Sir Saurabh sir to kindly take over the session. Good afternoon, sir. Welcome to the session, please. Sir, you're not audible, sir. Good afternoon, and thank you, ma'am. Good afternoon. Very sir. good afternoon to all the participants, to all the dignitaries present in this webinar. So today I have been given the opportunity to speak on the reproductive health and reproductive sexual rights of people with a special reference to the Andaman. So I like to share my PPT. Ma'am. So can I share? Yes, sure, sir. Okay, thank you. Next slide. First slide. Just a minute, please wait. Right, sir. Sir, you can carry on. Right, thank you. Can we move on to the first slide, please? Right, so sexual and reproductive health and rights. So you have heard that there are rights in law, we study rights. So now these rights, they are concerned with your sexual health and your reproductive health. So is there any, first question is, क्या एक अलग से classified rights हैं, sexual rights या reproductive rights, इनके बारे में क्या कोई law है अलग से जो exist करता है जिसके अंदर ये rights बता रखे हैं? तो ऐसा नहीं है, इनके लिए कोई अलग से लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है, एक लॉ का ही एक सब ब्रांच है ह्यूमन राइट्स, राइट? तो ह्यूमन राइट्स जो हैं, जो आपकी ह्यूमन डिग्निटी से कंसर्न है, जो भी आपके ह्यूमन रेस्पेक्ट से कंसर्न है, उसी का एक सब कैटेगरी है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स, ठीक है? So sexual and reproductive health and rights is a concept of human rights that is applied to your sexuality and reproduction, right? So basically it's a combination of 4 fields in some context or more or less extinct from each other. तो ये 4 जो fields हैं, ये कौन से हैं जिनको मिला के ये एक पूरा spectrum जो है constitute होता है, that is sexual health first, then your sexual rights, then your reproductive health, and then your reproductive rights, right? So when we study all these rights, all these 4 fields are treated separately, but they are very like in a very complex manner, they are intertwined, they are very adjoining, they have many things in similar, many things in common, right?
So coming to the next point, women's sexual and reproductive health is related to multiple human rights, including the right to life, the right to be free from torture, the right to health, the right to privacy, the right to education, and the prohibition of discrimination. So all these rights, they constitute the rights that are concerned with the women's sexual and reproductive health. Now, these two important institutions that are written in the next line, the last line, the Committee on the Social and Economic Cultural Rights, CESCR, and the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women, CEDAW, that's shortly called as CEDAW, they have both clearly indicated in their manual that the women's right to health includes their sexual and reproductive health. There are some comprehensive rights which describe the women's rights, and they also emphasize on the point that the women's right to health will include their sexual and reproductive health. Can we move on to the next slide, please, so that we can have a bit of historical background? Thank you. So to understand what the current situation is, what the current scenario is, we need to have a look at the historical scenario, how these rights came into force, how the development was made. So in 1994, the International Conference on Population and Development, ICPD, in its session in Cairo, Egypt, that was a very significant event in regards to the reproductive health, right? And it is considered to be the birth of the modern sexual rights and sexual health and reproduction rights, right? Because of that one particular conference, all these rights that they exist today, that we know today, they came because of that. And after that session, over the course of conference, and many debates took place regarding the family planning and everything regarding that. So the economics of public health and human rights changed vehemently according to that. Now a program of action was developed by the end of the ICPD and was approved and adopted by 179 countries, right? This ICPD is this international conference. So when it concluded and it was approved and adopted by 179 countries, this program of action, it affirmed, it sealed the fact that the sexual and reproductive health as a universal human right, and it outlined the global goals and objectives for improving the reproductive health based around central themes of free choice, women's empowerment, and viewing sexual and reproductive health in terms of physical and emotional well-being, right? तो पहले एक अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं था कि ऐसे भी कोई राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके प्लान ऑफ एक्शन ने इस कॉन्फ्रेंस के बाद इस चीज को प्रूव कर दिया कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का पार्ट है सेक्सुअल हेल्थ और सेक्सुअल राइट्स जो है एक वुमेन के, ठीक है, और उनकी सेंट्रल थीम रिवॉल्व करती थी अराउंड द फ्री चॉइस ऑफ वुमेन टू एंगेज इन सेक्सुअल इंटरकोर्स, their empowerment, right, and their health in regards with their physical and mental well-being both. This plan of action outlined a series of goals based on central mission of achieving universal access to reproductive health worldwide, and they were aimed to be accomplished by 2015. In 2000, the Millennial Development Goal MDGs, they were developed, and although reproductive health was not explicitly stated as one of the goals, it became an important component of goal 3, 4, 5 of the MDGs, right? Now these MDGs, what they are doing is they are some development goals, right? These goals, they are not explicitly stating, not clearly stating whether sexual health of women is included in them, but they became an important component after the coming of goal 3, 4, and 5. In 2010, the original POA that was formed in 1994, it was revisited by the UN and it was updated so that the objective of achieving the universal reproductive health care can be reflected by the year 2015. When the MDGs and the ICPD's plan of action, it phased out in 2015, the next objectives of sexual and reproductive health were folded into sustainable development goals, and the next iteration of the MDGs, which outline objectives to combat poverty through 2030. इन सब चीजों के साथ साथ पॉवर्टी को भी ये लोग 2030 तक एलिमिनेट करने का गोल बना के आगे चल रहे हैं. Can we move on to the next slide? Sexual health. So coming on to the next point, sexual health. So what is sexual health? Now you can see the definition written in the PPT. The World Health Organization defines sexual health as
Sexual health is a state of physical, mental, and social well-being in relation to sexuality, right? Sexual health, it's not only concerned about this, how you feel sexually, right? See, all three: physical, mental, and social well-being in relation to sexuality. Okay, so if any person is engaging in sex, out of that, how is he feeling physically? How is he feeling mentally? And how is he feeling socially? If sex is a social stigma in his society, then obviously he's not feeling socially very good about engaging into a sexual intercourse, right? If there's a mental pressure of not engaging into sexual intercourse, then obviously after engaging in sexual intercourse, he's not going to feel good, right? So it's a state of the combined three fields, right? Physical, mental, and social well-being. It requires a positive and respectful approach to sexuality and sexual relationships, as well as the possibility of having pleasurable and safe sexual experiences free of coercion, discrimination, and violence. Right? So engaging in sexual intercourse can only, like you can say that it was your health, sexual health is good if after engaging into a sexual intercourse, you can ascertain that it was pleasurable, it was very safe, you did it because of your will, you were not forced by someone else, you were not discriminated on basis of your caste, color, sex, religion, any of the factors for getting into sexual intercourse, and there was no violence whatsoever that preceded or succeeded after the sexual intercourse. If all these factors, when we combine all these factors, if you see that your sexual intercourse was free of all of these factors, then you can say that your sexual health is well good, right? So although sexual, now will come to the later part of the PPT when we see the reproductive health as a different definition. But obviously reproductive health and sexual health, both of them, they they share many similar traits, right? They overlap to some extent, particularly in relation to the information and services relating to the contraceptives, abortion, and STDs. Yet the scope of sexual health is more expensive, right? So they are similar in these particular factors, right? The use of contraceptives, the practice of abortion, the meanings of sexually transmitted diseases, but still the sexual health is a very wide topic as compared to reproductive health. So sexual health and well-being is recognized as an individual aspect of human rights with its root in right to health. See, I told you ना कि अलग से कोई law नहीं है sexual health को लेके या reproductive health को लेके. हमारे constitution में या फिर किसी भी और law में अगर आप पढ़ेंगे तो ये आपको अलग से कोई law नहीं मिलेगा. But हमारे constitution में right to life दिया है. And right to life includes right to health. So उस right to health का ये एक part है sexual health, right? वहीं से इसका origin है sexual health का. It's not a separate law. It's not a separate, you can say it's not a separate topic, right? It has originated from the right to health. That's right? So this well-being, the word well-being, it confirms that its domain is not limited to disease prevention and treatment. Well-being, ठीक है? Well-being, ये लिखा कि well-being होना चाहिए. यहाँ लिखा आप first paragraph में आप definition देखेंगे, उसमें दो word use हुआ है. State of physical, mental and social well-being. तो ये जो वेल बीइंग, ये जो टर्म है, इसका स्कोप जो है इट्स नॉट लिमिटेड कि हमें वेल कितना रहना कि हमें कोई डिजीज नहीं हो या हमें ट्रीटमेंट प्रॉपर मिल जाए, नो, बस इतना ही स्कोप नहीं है इसका. इट आल्सो इंक्लूड्स द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू ऑटोनॉमी एंड प्लेजर विद रेफरेंस टू सेक्सुअलिटी. ऑटोनॉमी, राइट? मोनोपोली नहीं है, किसी का फोर्सफुल प्रेशर नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है. यू आर डूइंग इट आउट ऑफ योर ओन फ्री विल, राइट? यू आर एंजॉयिंग इट. आप करने से पहले और करने के बाद you don't carry some baggage with you. In that case, you can say that your sexual health is very good. If you are carrying some baggage, if you are worried about some social stigma, आपको डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी मैंने जो कर दिया इसके बारे में. If someone comes to know about this, what I have done, then I'll have to answer so many questions. I'll be in trouble. So in that case, what you have done is that you have enjoyed for those particular minutes when you are engaged in that intercourse. Even in that intercourse, in the back of your mind, you will be burdened with all these fears, all these stigmas. So that cannot be said to be an indicator of good sexual health. Right? Can we move on to the next slide, please?
Now coming on to sexual rights. So what are sexual rights? So unlike the three other aspects of sexual rights and SRHR, the three rights other being the reproductive health, the reproductive rights, the sexual health. The struggle for sexual rights include and focus on sexual pleasure and emotional sexual expression, right? So sexual rights जो हैं वो किससे concerned है? Sexual pleasure को लेके और emotional sexual expression को लेके concerned है, ठीक है? So एक प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर की स्ट्रगल हुआ पूरा इन सेक्सुअल राइट्स को पूरा वर्ल्ड के सामने पोर्ट्रे करने के लिए, लेके आने के लिए, बताने के लिए कि हाँ ऐसे भी कुछ राइट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं, राइट? Like sex is not a very casual thing. If someone is engaging in it, certain rights are being derived as by the virtue of being a human. वो एक sexual right भी derive करता है, ठीक है? He has some certain sexual rights. तो वो कहाँ discuss हुए थे? They were discussed in WAS Declaration of Sexual Rights. What is WAS? Is the World Association for Sexual Health. So what is it? It is a multidisciplinary worldwide group of NGOs to promote the field of sexology. आप इसके बारे में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, विकिपीडिया पे मिल जाएगा ये क्या काम करता है. एक NGO है that is working towards the promotion of field of sexology. ये लोगों को aware करते हैं about the safe practices of sex, not considering sex as a stigma in the society. It was founded in 1978. ठीक है. So उन्होंने एक declaration दिया था, Declaration of Sexual Rights. 1995 में the platform for action from the 1995 Beijing Conference on Women established that the rights include the rights of women freely and without coercion, violence or discrimination to have control over and make decisions concerning their own sexuality, including their own sexual and reproductive health. ठीक है. तो ये जो कॉन्फ्रेंस थी बीजिंग में 1995 में, it was very important लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस थी बिकॉज इसने विमेन के ह्यूमन राइट्स एस्टेब्लिश किए विच इंक्लूडेड कि बिना कोवर्जन के, बिना वायलेंस के, बिना डिस्क्रिमिनेशन के दे women have all the control over what decisions they will make regarding their sexuality. उन्हें किसको पार्टनर रखना है, whether they want it to be a straight partner, whether they want to engage into LGBT, that's their own choice, that's their own will. ठीक है. Now this paragraph has been interpreted by some countries as the applicable definition of women's sexual rights. So आप समझिए कि ये कितना important conference था कि इस पैराग्राफ को उठा के ही कुछ कंट्रीज ने और सेक्सुअल राइट, women's sexual right की जो डेफिनेशन है उसमें as it is पेस्ट कर दिया. ठीक है. women's sexual right की जो डेफिनेशन उस कॉन्फ्रेंस में निकल के आई थी, जो अपन ने ऊपर पढ़ी कि women के सेक्सुअल राइट जो है they include the right of women to freely and without coercion, violence or discrimination to have control over and make decisions and concerning their own sexuality, including their own sexual and reproductive health. ये सेम डेफिनेशन कॉपी पेस्ट की है बहुत सारे कंट्रीज ने अपने जो लॉज हैं उनके अंदर women के सेक्सुअल राइट को डिफाइन करने के लिए. The UN Commission on Human Rights has established that if women had more power, the ability to protect themselves against violence would be strengthened. It goes without saying, ये बहुत कॉमन सेंस है, सही सीधी सी बात है कि अगर women के पास पावर होगी so they will be able to protect themselves against the violence. ठीक है. तो उनको पावर हमें एम्पावर करना पड़ेगा so that they can strengthen themselves among the various crimes that are being committed against them. Moving on to the next slide, please. Right. So a significant shift occurred in the association's history. तो association मतलब कौन सा association? WAS जो अपन ने पहले पढ़ा है, World Association of Sexology जो है, इसके एक significant event आया 1997 में when the World Congress of Sexology issued the Valencia Declaration of Sexual Rights. तो ये जो Valencia Declaration था ये बहुत important था. क्यों था? क्योंकि it was a very visionary move on the part of these two authorities, Maria Perez Conchillo and Juan Jose Boras Wallace. ये दोनों कांग्रेस के presidents थे उस time में. What they did was that they shifted WAS to more of an advocacy organization championing sexual rights as fundamental to the promotion of sexual health and field of sexology. तो इससे पहले जो है ये ऐसे NGO ही काम कर रहा था. ठीक है. इन लोगों के efforts के बदौलत हुआ क्या कि जो वास था वो it went on to become more of an advocacy organization rather than being a non-governmental organization. फिर इन लोगों का प्राइमरी फोकस हो गया to promote the sexual health and the field of sexology. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है, during that time to publicize the adoption of the Valencia Declaration, जिसको पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अटेंशन मिला था. तो सब्सिक्वेंटली इसके आफ्टर में इतना हुआ क्या कि वास ने कुछ रिविजन्स किए जो वेलेंसिया डिक्लेरेशन था इसी के अंदर, और इनने फिर एक नया डिक्लेरेशन जो है वो प्रपोज किया, वास डिक्लेरेशन ऑफ सेक्सुअल राइट्स,
और उसको यूएन की जनरल असेंबली ने 14th वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सेक्सोलॉजी हांगकांग 1999 में अप्रूव भी कर लिया. The WAS adopted the Declaration of Sexual Rights, which originally included 11 sexual rights. ठीक है, WAS ने क्या अडॉप्ट किया, जिसमें पहले स्टार्टिंग में 11 ही सेक्सुअल राइट्स थे, उसको अडॉप्ट किया, बट उसको फिर बाद में फिर से जाके इन्होंने पढ़ा, फिर से सोचा, फिर से रिवाइज किया. बाय 2014 मार्च दे एक्सपेंडेड इट, एंड अब उसमें जाके प्रेजेंटली 16 सेक्सुअल राइट्स हैं, जो कि हम सारे वन बाय वन अभी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड से. तो कौन कौन से 16 सेक्सुअल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं, प्लीज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. So the first one being the right to equality and non-discrimination. Okay. Second, the right to life, liberty, and security of the person. Third is the right to autonomy and bodily integrity. Fourth is the right to be free from torture and cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Fifth is the right to be free from all forms of violence and coercion. Sixth is the right to privacy. Seventh is the right to highest attainable standards of health, including sexual health, with the possibility of pleasurable, satisfying, and safe sexual experiences. Eighth one is the right to enjoy the benefits of scientific progress and its application. Next slide, please. The ninth is the right to information. See, the right to information job RTI, that is also under coming a right under the category of sexual rights, right? Then 10th is the right to education and the right to comprehensive sexuality education. 11th is the right to enter, form, and dissolve marriage and similar types of relationship based on equality and full and free consent. 12th is the right to decide whether to have children, the number and spacing of children, and to have the information and the means to do so. Right? ये कितना important right है, देखिए इससे कितने children करने हैं, बीच में कितना gap रखना है दोनों children के, right? और इसको acquire, ये information acquire करने के means होना और ये information available होना, that will be constituted under the right to sexuality, sexual health. The right to the freedom of thought, opinion, and expression. 14th is the right to freedom of association in peaceful assembly. 15th is the right to participation in public and political life. 16th is the right to access to justice, remedies, and redress. तो ये 16 जो है currently टोटली सारे sexual rights हैं जो अब exist करते हैं. Coming on to the next slide, please. For reproductive health, the next factor. Reproductive health. So again, the WHO has defined reproductive health, and the definition of health as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. Reproductive health or sexual health hygiene addresses the reproductive processes, functions, and systems at all stages of life. So अगर कोई बोले कि उसकी reproductive health अच्छी है, तो उसका क्या मीनिंग है कि उसको कोई बीमारी नहीं, यही समझेंगे अपन. वो भी यही सोचेगा कि if I am asserting this fact that I'm having a very good reproductive health, then what does it mean? He can say that I'm free from all STD. He can say that I have like his fertility rate is very high. All these factors will be counted by him, but the definition by WHO is not so limited. It's very wide in scope. It says that the complete physical, mental, and social well-being, right? That will constitute your reproductive health, okay? Along with all these factors, that you are free from disease, you are free from any infirmity, your health and hygiene is good, right? Reproductive health, therefore, implies that people are able to have a responsible, satisfying, and safer sex life. These three words are very important. आपके reproductive health जो है, उसका indicator क्या है कि आप लोगों को क्या है, responsible, satisfying, और safer sex life है. Okay. And that they have the capability to reproduce and the freedom to decide if, when, and how often to do so, right? आप capability तो रखते हैं reproduce करने की, but you don't have the freedom to decide कि when you will reproduce, right? How often you will reproduce, then your reproductive health cannot be said to be good, right? If someone is forcing you, if someone is pressurizing you कि एक बच्चा हो गया, उसके बाद आप पे ये pressure है कि next जो है आपको और एक साल में ही करना है. Again, a child, you have to conceive a child within a year of conceiving one child, then your reproductive health cannot be said to be in good terms, right? Because you are not able to decide by your own will कि आप बच्चों के बीच में कितना gap रखना चाहते हैं.
ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड हैं. One interpretation of this implies that men and women ought to be informed of and to have access to safe, effective, affordable and acceptable methods of birth control, right? तो इसी के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो है, it has been running on the campaigns to promote the use of contraceptives such as condoms and other methods so that लोगों को safe, effective और affordable और acceptable methods of birth control के बारे में पता चले and they use it more so that population पे भी control रहे as well as they are more focused on earning, more focused on lifting the standards of their living rather than just populating, right? So they also need access to appropriate healthcare services of sexual reproductive medicine and implementation of health education programs to stress the importance of women to go safely through pregnancy and childbirth to provide couples with the best chance of having a healthy infant. See, अब तो medical science ने बहुत progress कर लिया, as you all might know. In earlier times इतना advanced medical science नहीं था. Many people they used to have child जो कि 1 या 2 दिन के अंदर ही जिनका डेथ हो जाता था, right? Now innumerable reasons थे, right? Umbilical cord सही से नहीं काटा, बैक्टीरियाज वायरसेस जो हैं उनका बिल्कुल भी कोई हाइजीनिक वो होता नहीं था, सेटअप हाइजीनिक होता नहीं था, इस वजह से बहुत बच्चे पैदा होते ही मर जाते, राइट, विद इन अ डे और 2. तो ये चीज भी एक अच्छे रिप्रोडक्टिव हेल्थ की इंडिकेटर नहीं है, ठीक है. तो इसके लिए क्या है कि जब प्रेग्नेंट है विमेन जो है उसको एक सेफ प्रैक्टिसेस जो है उनके थ्रू गुजरना, राइट. और इन्फेंट रेट जो है, मोर्टेलिटी रेट जो है जितना डाउन जाएगी उतना ही ज्यादा आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है. अगर आपके इन्फेंट्स बर्थ लेने के बाद जिंदा रह जाते हैं, जी जाते हैं, then that means you have good facilities, your hygienic facilities, ठीक है. लोगों को नॉलेज है, लोगों को इंफॉर्मेशन है, they are not unaware, ठीक है. They are diligent, they know certain things which are to be kept in mind during all this process, right? So that in contrary will boost your reproductive health, okay. On the other hand, the individuals do face inequalities to reproductive health services. Inequalities भी face करनी पड़ती हैं और ये किस पे based हैं? They are based on socio-economic status, education level, age, ethnicity, religion, and resources available in their environment. अब क्या है कि मेडिकल साइंस तो डेवलप कर गया है, बट हमारा इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है that it's not possible for person belonging to a very rural area to have an access to those facilities, right? कोई इतने रिमोट एरिया में रहता है जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है, and if a woman is going through labor pain, let's suppose in the middle of the night, then you can imagine that she has to deliver in her home itself with no facilities that are up to the mark, right? So still ऐसी inequalities face करनी पड़ती हैं, ठीक है. आपका एजुकेशन लेवल पे भी डिपेंड करता है. अगर आपने पढ़ा ही नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते क्या हैं, कोई स्कूल ही नहीं गया तो उसको ये सब मालूम ही नहीं है कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, ठीक है, वैसे कॉमी क्या होती है, तो वो कैसे इन सब चीज़ों पे इनको जो है अमल करेगा, इन सब चीज़ों पे नहीं कर पाएगा, ठीक है. इट्स फॉर एग्जांपल दैट द लो इनकम इंडिविजुअल्स लैक द रिसोर्सेज for appropriate health services and the knowledge to know what is appropriate for maintaining reproductive health. Next slide, please. Reproductive health हो गया, फिर reproductive rights. तो ये कौन से rights हैं? Reproduction से related rights कौन से हैं? तो again World Health Organization जो है उसने define किया है. Second जो पैराग्राफ है आप इटैलिक्स में देख पा रहे हैं, डेफिनेशन, रिप्रोडक्टिव राइट्स रेस्ट ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द बेसिक राइट ऑफ ऑल कपल्स एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है. क्या है, किस चीज पर रेस्ट करता है आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स? ऑन द रिकॉग्निशन ऑफ द बेसिक राइट्स ऑफ ऑल द कपल्स एंड इंडिविजुअल्स टू डिसाइड freely and responsibly the number, spacing and timing of their children and to have the information and means to do so, and the right to attain the highest standard of sexual and reproductive health. So इसमें दो terms use हुए हैं, of all the couples and individuals, right? So ये right जो है, reproductive rights जो है, ये सिर्फ married couples को ही available नहीं, they are available to couples as well as individuals, right? So individuals के पास भी ये right है, they can decide and they can freely decide क्या
कि हम कितने बच्चे पैदा करेंगे, उनके बीच में नंबर, टाइमिंग कितना रहेगा, स्पेस कितना रहेगा, ये सब इंफॉर्मेशन जो है एक्वायर कर सकें और हाईएस्ट स्टैंडर्ड अटेन कर सकें सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, ठीक है। This also include the right of all to make a decision concerning reproduction free of discrimination, coercion and violence। ये वो सेम चीजें जो हमने पहले देखा था हेल्थ राइट्स के अंदर, कि उनके ऊपर कोई वायलेंस, कोवर्जन या फोर्स नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए से क्लियरली आप समझ रहे हैं, राइट, कि आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ये कास्ट जो है दैट विल ओनली engage in intercourse with these people, right? Everyone has a right in this country to love the partner of their choice and engage in sexual intercourse. The only condition being that it must not be by coercion, it must not be forceful. If both the partners are agreeing, they are doing it by their own free will, then there's no foundation, right? The area of sexual and reproductive rights is influenced by the contextual and cultural, social norms, socio-economic factors and existing laws and regulations, ठीक है। तो ये जो आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं, ये कहते हैं कि ये किन से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आपकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के नॉर्म्स कैसे हैं, हैज इट डेवलप टू अ वेरी ग्रेटर स्टेज, या फिर वो अभी भी 50 साल पहले के टाइम में जी रही है आपकी सोसाइटी। ये उस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपके रिप्रोडक्टिव राइट्स उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे जितनी सोसाइटी आपका आगे डेवलप कर गई है, ठीक है। आपके लॉज एंड रेगुलेशंस क्या हैं, अगर आपके लॉज जो है वो बड़ी रिजिड हैं, कुछ चीजों को लेके स्ट्रिक्ट हैं, तो मे बी वो चीज सही हो सकती है। बड़े फ्लेक्सिबल राइट्स हैं, बड़े फ्लेक्सिबल लॉज हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर लूप होल्स फाइंड कर लिए लोगों ने, तो फिर उसका फायदा उठा के जो आपका सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं वो इन्फ्लुएंस होंगे, ठीक है। The socio-structural climate may affect both the access to and the quality of sexual and reproductive health care and interventions, right? Next slide, please. So, अब थोड़ा, since I'm teaching law in Andaman Law College and being a learner of law, it's my duty to tell you that how in what way the constitution or law, जो हमारा संविधान है उसके अंदर क्या कुछ भी provisions हैं जो दिए हुए हैं related to reproductive health rights। तो जैसा मैं स्टार्टिंग में भी बोल चुका हूँ, एम्फेसाइज करते ही आया हूँ पूरी प्रेजेंटेशन में कि बहुत कुछ पर्टिकुलर राइट्स तो नहीं दिए हैं, ठीक है, क्योंकि राइट टू रिप्रोडक्शन एंड राइट टू हेल्थ, हेल्दी रिप्रोडक्टिव राइट्स जो है दे आर अ पार्ट ऑफ राइट टू हेल्थ, ठीक है। तो राइट टू हेल्थ जो है, इट इज राइट टू हेल्थ भी कोई राइट नहीं है, इट इज कमिंग आउट ऑफ राइट दैट इज राइट टू लाइफ विच इज अ फंडामेंटल राइट। सो एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज तो नहीं है राइट टू हेल्थ एज ए फंडामेंटल राइट, बट हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजंस हैं जिनसे ये पता लगता है कि राइट टू हेल्थ और राइट टू टाइमली एंड एडिक्वेट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ये हमारे लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। कोर्ट के अंदर जब केसेस जाते हैं तो कोर्ट जो है ऐसे लॉज नहीं होने के बाद भी कोर्ट जो है अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ बातें बोलता है जो कि आगे आने वाले टाइम के लिए फिर सभी कोर्ट्स को फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। वो भी एक रूल बन जाता है, प्रेसिडेंट बोलते हैं उसे, ठीक है। प्रेसिडेंट सेट हो जाता है तो फिर उस नीचे वाले जितने भी कोर्ट है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बीइंग द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, एक जजमेंट दे दे तो फिर दैट हैज टू बी फॉलोड बाय ऑल अदर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, राइट। सो ऐसे ही कुछ केसेस हैं। तो फर्स्ट केस था ये परमानंद कटारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एक PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की गई थी रिगार्डिंग द प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट टू इंजर्ड विक्टिम्स ऑफ मोटर एक्सीडेंट्स, ठीक है। तो होता क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई रोड एक्सीडेंट हुआ, तो रोड एक्सीडेंट में आपने विक्टिम को उठाया रोड से, आप लेके गए हॉस्पिटल। तो पहले होता क्या था कि जनरली हॉस्पिटल्स का जो बिहेवियर था वो ऐसा ही रहता था कि आप पहले फॉर्म फिल कीजिए, आप कौन लेके आए ये बताइए, ये फॉर्म फिल कीजिए, फीस जमा कीजिए, उसके बाद हम इनको एडमिट करेंगे। अब रोड एक्सीडेंट क्या है कि इतने अर्जेंट केसेस होते हैं कि वहाँ पे जो भी विक्टिम है उनके पास दे हैव वेरी लेस टाइम, राइट। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम ओनली, द लाइफ डिपेंड्स ऑन हाउ क्विकली यू टेक एन एक्शन, राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो PIL लगी थी इसमें बोला था कि इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जाए रोड एक्सीडेंट के इंजर्ड विक्टिम्स को। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर स्टेट पे, मतलब हमारी सरकार पे ये जिम्मेदारी डाली गई है दैट दे हैव टू प्रिजर्व द लाइफ and the doctors at the government hospitals are duty bound to extend the medical assistance for
प्रिजर्विंग लाइफ। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं उनकी ड्यूटी है उनको मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करनी है ऐसे विक्टिम्स को, राइट। नो लॉ, प्रोसीजर और स्टेट एक्शन कैन वॉइड और इम्पीड दिस ऑब्लिगेशन ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ये जो मतलब ये जो ड्यूटी है, तो इसको कोई भी लॉ या इसको कोई भी प्रोसीजर या इसको कोई भी सरकार जो है वो इसको हटा नहीं सकती, इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसीलिए आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जनरली ट्रॉमा सेंटर करके एक अलग से वार्ड बना रहता है, राइट। वहाँ पे आप रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जितने भी बजे अगर आप रोड एक्सीडेंट की कोई विक्टिम को ले जाएंगे, देयर हैज टू बी सम मेडिकल पर्सनल देयर जो कि वहाँ पे ट्रीटमेंट एक्सटेंड करेगा उस विक्टिम को, ठीक है। The next case being the Paschim Banga Khet Samiti versus State of West Bengal. It was held that the state is obligated to provide the adequate medical facilities, and denial of timely medical intervention to a person in need of such treatment by a government hospital is violation of Article 21. Same वही बात रिपीट की है कि ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है, एडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाए एक विक्टिम को, और अगर कोई डिनाई करता है टाइमली मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने से कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो वो आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट टू लाइफ दिया है उसका वायलेशन कर रहा है और उसके लिए वो अकॉर्डिंगली पनिशेबल भी होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसके अलावा ये थे फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 21 जो है वो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, उससे निकल के आता है राइट टू हेल्थ। फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो मे बी आप सब जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप उसके अगेंस्ट क्या है, कोई भी रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं और कोर्ट में उस राइट को एनफोर्स करवा सकते हैं, ठीक है। इस जो बाउंड है कोर्ट उस राइट को एनफोर्स करवाने के लिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज रहते हैं, जिनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो ये जो डीपीएसपी होते हैं ये स्टेट के लिए गाइडिंग लाइट, गाइडिंग पॉइंट का काम करते हैं। ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, राइट। अगर स्टेट ये नहीं करे तो आप स्टेट को कोर्ट में नहीं घसीट सकते, आप उनके अगेंस्ट एक्शन तो नहीं ले पाओगे। बट क्या होता है कि ये फिर ये भी लिखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारे स्टेट को ये सब भी करना है। हम कोर्ट में ले जाके एनफोर्स तो नहीं करवा पाएंगे, राइट, पर हम क्या कर सकते हैं कि वो सरकार इन सब चीजों पे अगर अमल नहीं करेगी तो नेक्स्ट टाइम जब भी इलेक्शंस होंगे उस सरकार को वापस पावर में नहीं आने देंगे। सो डीपीएसपी भी उतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमारे डीपीएसपी जो पार्ट 4 के अंदर है उनके कुछ आर्टिकल्स हैं जिनसे भी हमें पता चलता है कि राइट टू हेल्थ जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है आर्टिकल 47, it's among the primary duties of the state to raise the level of nutrition and the standard of living of its people and to improve public health. प्राइमरी ड्यूटी है स्टेट की कि अपनी सोसाइटी में न्यूट्रिशन का लेवल इंक्रीज करे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करे और पब्लिक हेल्थ जो है उसको, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करे। उसके लिए जितने भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे स्टेट को। आर्टिकल 39E जो है that proclaims that the state should direct its policy towards ensuring that the health and strength of both men and women workers and of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter vocations unsuited to their age or strength, ठीक है। तो 39 क्या बोलता है कि स्टेट को अपनी पॉलिसी इस तरह फॉर्म करनी है कि मेन और वीमेन दोनों जो वर्कर्स हैं उनकी हेल्थ स्ट्रेंथन हो, ठीक है, और जो चिल्ड्रन वर्कर्स हैं उनकी जो उनका जो राइट्स हैं वो अब्यूज नहीं हो, ठीक है। और सिटीजन्स जो हैं वो अपने पैसे की कमी की वजह से, अपनी इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से जो है अपनी एज और स्ट्रेंथ से ज्यादा वोकेशन के अंदर जो उनको अलाउ नहीं करता है उससे ज्यादा वोकेशन के अंदर एंटर ना कर जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज अ पर्सन जो कि 60 years old है एंड ही इज नीड ऑफ मनी, राइट, उसके पास पैसा नहीं, सो उस पैसे नहीं होने की वजह से, इकोनॉमिक नेसेसिटी होने की वजह से मान लीजिए वो कुछ ऐसे जॉब में एंटर कर जाता है जहाँ पे उसको हैवी वेट्स कैरी करने पड़ते हैं जो कि उसकी एज अलाउ नहीं करती है, राइट। बीइंग सच एन ओल्ड मैन ही कैन नॉट बियर टू कैरी ऑन सच हाई वेट्स, राइट। सो ऐसा नहीं करना है, स्टेट को ये इंश्योर करना है कि ऐसा अब्यूजमेंट नहीं हो लोगों का अगर उनको इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से ऐसे काम में एंगेज होना पड़े जो कि उनकी एज या उनकी स्ट्रेंथ जो है वो अलाउ नहीं करती है। Next is Article 39F that provides that the states must take step to ensure that the children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner. तो ये बच्चों के लिए ये प्रोविजन है कि स्टेट को ये देखना है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले, फैसिलिटीज मिले, सो दैट वो एक हेल्दी मैनर में डेवलप कर सके
ताकि आगे चल के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने, कंट्रीब्यूट कर सके नेशन बिल्डिंग के अंदर। आर्टिकल 42 बोलता है दैट द स्टेट शैल मेक प्रोविजंस फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, तो काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑब्वियसली वहीं रिक्वायर्ड है जहाँ पे कंडीशन जो है काम की वो थोड़ी डिफिकल्ट है। ऑब्वियसली पीपल वर्किंग इन ऑफिसेज which are equipped with AC, they don't require some very human conditions. तो ये बात हो रही है वहाँ माइंस की, फैक्ट्रीज की, राइट, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन टफ होती हैं, तो वहाँ पे स्टेट को ये इंश्योर करना है कि टफ है बट ह्यूमेन है, राइट। पर्सन जो है वो इम्पॉसिबल नहीं हो काम करना, दे आर ट्राइंग वर्किंग इन अ डिफिकल्ट कंडीशन बट दैट्स नॉट सो डिफिकल्ट सो एज टू डेंजर देयर लाइफ और कंफर्ट, राइट। एंड मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ के लिए आपको पता ही है हमारे स्टेट ने कोई भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर जितनी भी women employees हैं they are provided with maternity relief। जब भी they are delivering a child तो उनको maternity leaves भी मिलती है। So all that provisions. Lastly, Article 45 states that the state shall endeavor to provide early childhood care and education for all children until they complete the age of 6 years. तो जितने भी हमारे न्यू बॉर्न चाइल्ड हैं उनके केयर का इंतजाम करना है स्टेट को, एंड अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years उनके एजुकेशन का भी सारा ख्याल जो है स्टेट को ही रखना है। ये भी हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। So that was basically briefly all about the reproductive health, reproductive rights, sexual rights. So with a special reference to Andaman, the thing is that very honestly telling you people that I'm not so aware of what's going on in Andaman, but after consulting the national survey, you might be knowing the National Family Health Survey for 2019-20. I can see some statistics which I can share with you. The female ratio in Andaman in 2015-16 was 977, right? 977 on per 1000 males. 977 females जो हैं हर 1000 मेल पे एग्जिस्ट करते थे अंडमान में in 2015-16 survey. But in 2019-20 survey of NFHS 5, your count has drastically gone down to 963, right? तो ये जो reduce है, ये नंबर जो reduce हुआ है, ये क्या indicate करता है? That somehow the female population of female in comparison to male have decreased in the island, and that's not a very good sign, right? So it has to go up, right? It cannot go down, because if it's going down, that it's portraying that the women are not able to survive, or we don't know, they can be many factors which are showing that the people are not the women are not being living a very healthy life in these islands, right? So 977, 963, that's almost a difference of 14 women and that's a figure of, it's a difference of 3 years, right? 2015-16 survey 977, 2019-20 survey 963. So we have to work for that, right? We have to, you being the responsible citizens, you being the youth, you must enlighten the people, acknowledge the people, you must approach the government, approach the authorities, so that you must read the directive principles of state policy. You must ensure that the state is giving attention to all these directive principles, because if they are not, then obviously you cannot carry them to the court, but you can change the government the next time elections are near, right? Reproductive health से अब आप क्या समझे कि आपका राइट है कि आपको जो है चिल्ड्रन कब करना है, कितना करना है। देखो मैं एक प्रैक्टिकल बात कर लेते हैं कुछ, सिंस द प्रेजेंटेशन इज दैट इतना ही है प्रेजेंटेशन में और कुछ नहीं है, बट द प्रैक्टिकल थिंग इज कि अभी आपने न्यूज सुना होगा प्रियंका चोपड़ा वाला, द प्रियंका चोपड़ा इज गोइंग टू बी अ सरोगेट मदर वेरी सून, राइट? सो सरोगेसी जो है दैट इन इंडिया इज आल्सो कंसीडर्ड अ स्टिग्मा एज ऑफ नाउ। आई होप सरोगेसी क्या होता है आप सब मालूम है, आप अवेयर हैं। सरोगेसी इज लाइक व्हेन ए मदर चूजेस टू not to bring up a baby by herself, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू उसके हस्बैंड का जो सीमेन है दैट इज इंसर्टेड इनटू द some other women, and that women carries on brings on the child after 9 months. So Priyanka Chopra has opted to go for that decision, and that should be respected. I mean, if some women is doing it for money, that's not a stigma.
से इंडिया में तो ये बहुत होता है, गुजरात के अंदर इट्स वेरी बिग बिजनेस, सरोगेसी बिजनेस। वहाँ पे बहुत सारी वीमेन हैं जो कि यूएसए से, यूके से और ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे लोग हैं जो कि वहाँ पे आते हैं। दे प्रोवाइड गुड अमाउंट ऑफ मनी, huge amount of money to these women. All they have to do is they have to take care of a baby in their fetus is implanted inside them. So for 9 months till the delivery of the baby, they have to take care of it, right? So ये एक ऑप्शन है, ये आपका राइट है कि आपको किसी को बर्थ देना है खुद से दे, किसी पे फोर्स नहीं कर सकते हो आप, ये उनका राइट है, राइट? रिप्रोडक्शन तो हो ही रहा है, somehow they are bringing another life in this world, so you cannot force someone कि वो खुद से करना चाहते हैं, if they are wanting to take it, तो उसका भी यूज ले सकते हैं। अनदर डिस्कशन जो मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ लास्ट में, जो अभी हाईली न्यूज में है, मे बी आपने सुना होगा, मैरिटल रेप के अगेंस्ट जो चल रहा है। आप अवेयर हैं मैरिटल रेप के अगेंस्ट जो अभी हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे कोर्ट्स के अंदर जो बड़ा खींचतान चल रही है? मैरिटल रेप के बारे में जो एक डिस्कशन चल रहा है, बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट्स जो हैं डेली बेसिस पे हो रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के सामने। आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड जो है, बिकॉज उसने क्या है कि एक इम्यूनिटी प्रोवाइड की है, किसे इम्यूनिटी प्रोवाइड की है? हस्बैंड्स को इम्यूनिटी प्रोवाइड की है हमारे पीनल कोड ने फ्रॉम द चार्जेस ऑफ रेप, ठीक है? तो जो पेटिशनर्स हैं, जिनने पेटिशन फाइल की है इस इम्यूनिटी के अगेंस्ट, ठीक है, वो इस बात पे एकदम लगे हुए हैं कि हटाइए आप इस इम्यूनिटी को, इस लॉ में से निकाल के बाहर कीजिए, ठीक है? और डिफेंडेंट जो हैं, जो इसको डिफेंड कर रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे लॉ के अंदर बहुत से प्रोविजंस हैं, क्रिमिनल लॉ में, सिविल लॉ में एग्जिस्ट करते हैं ऐसे प्रोविजंस, जो कि एक अगर कोई वीमेन है जो कि जिसका सेक्सुअल अब्यूज हुआ है मैरिज के अंदर, तो उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है दूसरे लॉ में। आप यहाँ से आईपीसी से रेप के सेक्शन के अंदर एग्जैक्टली क्या है कि 375 सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड का, उस सेक्शन के अंदर रेप का ऑफेंस डिफाइंड है, ठीक है? तो उसके अंदर एक एक्सेप्शन ऐड किया हुआ है कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है कोई पर्सन विद हिज वाइफ, एंड वाइफ जो है नॉट बीइंग अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, अगर वाइफ 15 साल से ऊपर की एज की है, तो वो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा हस्बैंड का अपनी वाइफ के साथ, वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जो पेटिशनर्स हैं, पेटिशनर कौन है? या एक फाउंडेशन है, आरआईटी फाउंडेशन है, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वीमेन्स एसोसिएशन है, और 2 इंडिविजुअल्स और हैं, ठीक है? इन लोगों ने पेटिशन लगाई है कि ये जो एक्सेप्शन है ये आप हटा दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपने तो यहाँ पे जो मेल हैं उनको आपने ये सुविधा प्रोवाइड कर दी कि अगर उनकी बीवी 15 साल से ऊपर की है, तो अगर वो उसकी मर्जी के खिलाफ भी सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो वो रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा, एंड दे विल बी सेव्ड। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं है, बहुत से केसेस में 15 अबव ही हैं वीमेन, बट स्टिल दे आर एंगेजिंग इनटू सेक्सुअल इंटरकोर्स अगेंस्ट देयर विल, इवन इफ दे आर द वाइफ ऑफ दैट गाय, ठीक है? और जो अपोज कर रहे हैं, अपोज करने वाले कौन है? ये एक एनजीओ है हृदय फाउंडेशन करके, और अमित लखानी एंड ऋत्विक बिसारिया एंड वेलफेयर ट्रस्ट के, वो इसको अपोज कर रहे हैं, ठीक है? वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। अब पूरा कंट्री जो है इस बात को डिस्कस कर रहा है कि वेदर इंडिया के अंदर जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन ए हस्बैंड एंड ए वाइफ जो है, क्या उसको भी हम रेप के एम्बिट में लेके आ जाएं, ठीक है? इसका डर क्या है? क्यों नहीं? कुछ इसके कंसर्न्स क्या हैं? इसके ऑपोजिट में आर्ग्यूमेंट्स ये हैं कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो होगा क्या? एक कॉज, एक इसका आफ्टरमैथ में ये भी हो सकता है, एक कॉमन कंसर्न ये है कि बहुत से फॉल्स एक्यूजेशंस जो हैं वो भी लेवल्स हो जाएंगे हस्बैंड्स के अगेंस्ट, जो हमारी डिसग्रेंटेड वाइफ्स हैं उनके थ्रू, ठीक है? अब ये कंसर्न भी लेजिटिमेट है, देखिए ये बात गलत नहीं है सोचना कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया तो क्या होगा, कोई भी 15 साल से ऊपर की जो वाइफ है, अगर मे बी एनी रीजन कैन बी देयर, अगर उसको उस घर में नहीं रहना है, इफ शी इज नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज, सो व्हाट शी कैन डू इज सिंपली फाइल अ केस और बोल देगी कि मेरे कंसेंट के विरुद्ध सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था, तो हस्बैंड को उठा के पुलिस जेल में डाल देगी कि ये रेप हो गया। अभी तक तो बच रहे हैं, क्योंकि एक एक्सेप्शन है जो बोलता है कि 15 के ऊपर अगर वाइफ है एज की, तो उसके अगेंस्ट अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो रेप नहीं होता है। पर अगर इसको अपने क्राइम बना दिया, ऑफेंस बना दिया, तो फिर बहुत सारे हस्बैंड ऐसे जेल में चले जाएंगे। तो ये भी एक लेजिटिमेट कंसर्न है, राइट? बट कंसर्न है, पर कोर्ट जब ये बात पेटिशनर्स ने बोली कि नहीं ये कंसर्न सही नहीं है, तो कोर्ट ने भी ये बोला कि हाँ, हर लॉ मिसयूज हो सकता है, बट ये फैक्ट कि हर लॉ मिसयूज हो सकता है
This cannot be a ground to not bring a law. ठीक है, आप ये कह के कि ये लॉ मिसयूज हो सकता है, आप किसी लॉ को आने से नहीं रोक सकते। तो ये एक आर्गुमेंट है, चल रहा है, फाइनल डिसीजन आया नहीं। आई होप कि आप इसका ट्रैक रखेंगे, देखते रहिए, न्यूज देखते रहिए, क्या होता है फाइनली, क्या हेल्ड होता है, डिस्कस कीजिए आपस में, क्या इसके ऑल्टरकेशंस हो सकते हैं, अप्रकेशंस हो सकते हैं, कितना सही रहेगा, कितना गलत रहेगा, वो तो टाइम बताएगा। ये तो ऐसा ये डिस्कस करेंगे, उससे ये और ज्यादा क्लियर होगा। सोसाइटी जो है डायनामिक सोसाइटी, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, कीप्स ऑन चेंजिंग एवरी डे, एवरी मिनट, सो द लॉ हैज टू अकॉर्डिंगली चेंज विद इट। लॉ स्टेगनाइज होके नहीं रह सकता, राइट? So yeah, that's it. That's all for my presentation. If the participants have any question, I'll be very glad to answer them. Thank you, sir. Students, it's a request. If you have any queries regarding anything, please be free to ask sir. Sir will be eager to answer your queries. Any one of you? आई थिंक सर आपने इतने अच्छे से सब समझाया है, बच्चों को समझ आया है इस चीजों को, एंड आई होप only two outcomes are possible. या तो सब समझ आया या कुछ नहीं आया, इनको बहुत नहीं कुछ नहीं समझ आया, ये तो पॉसिबल नहीं है सर। आपने इतने अच्छे से समझाया है उनको, इतने सिंपल लैंग्वेज में, एंड सभी समझ पाए होंगे, आशा तो यही करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सेशन के लिए, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिला। और अभी मैं रेखा मैम को इनवाइट करूंगी वोट ऑफ थैंक्स के लिए। रेखा मैम, इट्स टू यू। Good afternoon all. As all good things come to an end in life, so is the webinar on behalf of Department of Home Science, JNRM, Blair. I, Dr. Rekha Kumari, resource person, Department of Home Science, JNRM. I take this opportunity to propose vote of thanks to those directly and indirectly contribute to this webinar on reproductive rights of women, expressing autonomy of choice with special reference to Andaman and Nicobar Island. At the outset, my heartfelt gratitude to Dr. Pushpa Madam for enlightening our dear students about promoting the reproduction right or reproductive right and gender equality. For the second technical session, I would extend my thanks to Dr. Sitara Balanti on reproductive rights, national and international perspective. Thank you, Dr. S. Kavita Mentally, for guiding and empowering knowledge to our budding adult on reproductive choice and rights. I would like to thank Dr. Abhijit Roy for throwing a light on women reproductive health care and guiding the youngster. For the last technical session, I extend my thanks to Sri Saurabh Dudi for sharing his knowledge about reproductive health, special reference to Andaman and Nicobar Island, so that the students are enlightened. I would like to thank our principal, Dr. H.K. Sharma, for his enthusiastic support. A special thanks to our HOD, Dr. K. Venkateshan, for organizing such an informative and educative webinar for teaching or non-teaching staff or students. Thank you, sir. Thank you so much. For technical support, I thank Dr. C. Jiva. I thank Ms. Binku Mandal for reporting. I also thank Mrs. Deepika, resource person, Department of Botany, and Mrs. Poonam Ajay Singh, resource person, Department of Home Science, for moderating the webinar. And our heartful thanks to our students for active participation. With these warm words and a kind message, we move to the end of today's webinar. Thank you. Have a good day. Sir, I would like to call our HOD, Dr. K. Venkateshan. Sir, I hand over to this thing. Please say something about the webinar. Thank you very much, madam. Respected speaker Saurabh sir, and all the speakers of today, Dr. Pushpa ma'am, Kavita ma'am, Sitara ma'am, Avijit sir. They shared in detail about the reproductive rights and choices of women. Though this topic is new to all of you, what I request you,
take something to home, whatever I learned in the throughout the day webinar, take few messages, and this may not be useful for you, but try to explore how this can be the knowledge you have gained over this webinar is going to be useful for really those who are in need, either under the knowledge base or maybe medication base, maybe referral, all those things. I request all of you to concentrate on this aspect and try to explore how this will be beneficial to others and how you can be a moderator or a modem for sharing the knowledge and information to the people those who are in need. Further, I would like to thank National Commission for Women for supporting us to organize such a wonderful program. And I request all of you kindly start the video. Let's take a virtual group photo. Moreover, in the chat box, we have shared the feedback link. I request all of you to please fill the feedback form. You can copy this and you can fill it now itself, based on which you will receive the e-certificate from the organizer. Thank you very much. Please put on your camera, start video mode. नहीं है, कोई नहीं आ रहा है, फोटो नहीं चाहिए. Bingo, can you coordinate? स्टूडेंट्स प्लीज आपका वीडियो ऑन रखिए और आप स्क्रीनशॉट लेना है हमें. Please hold on for a few seconds. Thank you, students. Thank you so much for joining and for your cooperation. Hope you learned from the webinar. Thank you. Kindly fill the feedback form which has been given to you. And if you don't have it, kindly contact us so that we can forward it to you. Thank you.
நான் முருகன் வீட்டு போலையா? முருகன் சார் வீட்டுக்குள்ள இருக்கேன் சார். வீட்டுல இருக்கியா? முடிஞ்சியா ப்ரோக்ராம்? முடிஞ்சு 1/2 மணி நேரம் ஆச்சு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? கேமரா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு என்ன முருகன் இங்க वाइंड अप करेंगे ना? हो गया ना? ओके 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 मुरुगन मुरुगन and Ramita, Surya, second year ka Surya, inform your classmates to fill the feedback form. It is available in the chat box और आपको ग्रुप में भी डाला है, उसको थोड़ा सा बाकी लोग बोल दो फीडबैक भरने के लिए बोल दीजिए, ठीक है? ओके सर. जी सर. Okay, okay. Bingo will give direction to you whether to come day after tomorrow or not. Tomorrow or not. उनसे थोड़ा सा पूछ लीजिए. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.